have done this, and it made it possible. So we'll begin with the day's proceedings with a presentation by Shri Devesh Srivastav, CMD GIC Re on reinsurers' support to crop insurance for the next 3-year cycle. Devesh sir, over to you. Zordar taaliyan ho jaye. Thank you, ladies and gentlemen. Morning, everyone. So this is a short presentation on what reinsurers. I thought you would do it for either way. I do. On what the reinsurers would be doing as we progress into the next 3 years. So if you look at the first screen, the first slide of the presentation, we have just listed out certain things about the scheme. Nothing new really. You people are the experts. You know much more than we do. These, after all, sit behind the insurance company. So we have a lag there. So that is it. We know that this is the 8th year of the PMFBY. It has been a very long journey. I mean, this was the latest version of the earlier versions which started way back in the 70s. Through all the meanderings, it has now got settled possibly in the cup and cap model that we are seeing nowadays. Of course, subject to further change as we go forward. But the point really here is that when we talk about the farmers who have pretty much other things on their plate, what we are trying to look at is simplicity. And simplicity possibly means something more basic that the farmer is given out, and then the bells and whistles that time are not there. Maybe we add that as we go along. But the simplicity of the product itself is what should entice the farmers and make it much more desirable for them, because then the claim processes also become equally easy to administer, and the DBT will help even more therefore. As we see what is going to be the thing further on, we know that certain states did move out, certain states want to come in, certain companies, insurance companies moved out, they also want to come in now. For a variety of reasons, in fact, the regulator has announced the expenses of management to be capped at 30. Now, this one has something that is a much lower expenses of management and is therefore much more alluring, so to say, because it helps you build a book which is lower than the stipulated 30% that the regulator has stipulated. But be that as it may, the fact remains that Fasal Bima, crop insurance globally, requires a lot of reinsurance, and essentially almost the ballpark figure is about 75 to 80% of the entire portfolio is usually reinsured. Reinsurance is certainly the tail that wags the insurance canine, and if that be the case, we pause here for a moment to look as to why do these crop insurance schemes require reinsurance. They require it simply because of the volatility that is there inbuilt in the scheme, and that volatility is what makes it a bit of a deterrent for the insurance companies to keep it onto their books. That is why they like to seek reinsurance, and also that the reinsurers pay you commissions for getting that premium that you are handing out to them, and that is also an added benefit to the insurance companies. So if that be the case, reinsurers also have a lot of soul searching to do, because they are giving their balance sheet as to the insurance companies to ride on. Therefore, that would come with some checks and balances. But if we look at the market that it has been for the PMFBY in the earlier years, you would see that I'm just talking about the pure loss ratios, which is the last column there. That is the volatility that we experience. It has been pretty volatile, and this is just the beginning. As we look at global warming and the way climate change is happening, this is supposed to get further, challenging, so to say, as we move forward. And therefore, there are a lot of thoughts that a reinsurer would be having in his head. Certain things that we have been speaking about is possibly, do we need to build in a sort of a kitty, a reserve sort, so that when tomorrow, when the situation gets or starts to get out of hand, we have something in our book already, that the nest that we have feathered, which we can then draw upon in hard times and take it further on from there.
The other thing that you would see here is that there are certain states who are big on it, which is of course MP, Maharashtra, Rajasthan, and to a certain extent Tamil Nadu, though Tamil Nadu is more of Rabi, not so much of Kharif there. But be that as it may, the spread should be much more. We need many, many more states to come into the scheme, because the more the spread, which is a basic tenet of reinsurance, the more of spread, the better the risk becomes, and therefore the rates also start falling down. Now, if you look at the bottom right-hand corner, you would see how the weighted rate over the years has moved. Now, there is seen a decline in the last bar chart, but you see, I mean, let me first narrate an incident to you. I hail from Lucknow, and that place is famous for biryanis. There's a gentleman in Chowk, which is the traditional old Lucknow area, called Idris. Idris ki biryani is supposed to be very, very famous because it's a very nafis, everything is like the best that you can get. So once he was asked by the media, because obviously now social media is at its peak, at what is so good about your biryani, Chacha? And Chacha said, दो तीन चीज़ें हैं जो बुजुर्ग सिखा गए हैं और मैं उनको अभी भी I'm following that. First thing is, of course, the ingredients, which of course none of us deny that the ingredients should be as fresh as possible. The second thing he said is that try to cook it with as much affection and love as possible. Of course, most certainly yes. It is the third thing which is most applicable here, which I would want to state. He says, और मेरे बुजुर्ग हम मुझे सिखा गए हैं कि मुनाफा उतना बिरयानी में नमक हो जितना. Now, that is a munafa that he talks about, because that is the sustainable model. That is important for us because, you see, when it's a good year for a crop insurance scheme, the returns are pretty much very much into the double figures. Now, are we looking at that? Should we be looking at such high returns, or should we be thinking of, passing these benefits on to the farmers to a certain extent? And then also building a reserve from that benefit that we have in a certain year, so that going forward, when the whole scene turns ugly and you have these natural catastrophes that are hitting your portfolio, then it is that money that you have accumulated that will come to your rescue and will make your portfolio still appear healthy even in a bad year. And that is how the insurance should work. The next one, of course, is the GIC book. We have been huge supporters of the PMFBY and continue to be so. For us, when we stated that way back 6-7 years ago, when the whole 8 years ago when the scheme started, that it's a Government of India scheme and we will be supporting it whole hog. We have continued to support, and all the cedents who deserved our attention have got it, because we know that this scheme is important for not only the nation but also for that inclusive approach that we speak of. That is the reason why we should be having, as much of an indulgence in the scheme as possible. These losses, of course, have badly hit GIC in the past. In the sense, we were, in fact, a very bad stage once upon a time. Our solvency had plummeted to 1.51. The regulator stipulates 1.50. We were almost at the brim. We had started showing net losses, something that we hadn't done in 50 years of our history, or 50 years of our existence. But then, when we started looking at the scheme afresh and trying to turn it around, we saw that there is merit in giving out capacity to the ones who will actually be a partner to you and not really write your balance sheet with absolute nonchalance. That is what was the turning point. Now, if you see the pie charts down below, you will see how the GIC share has plummeted over the years, but that has made the book much more healthier for us in crop insurance. And today, we are in a state to take it forward because we have set our processes right, our standard operating procedures correctly, and we know how to go about the scheme in a manner that it's sustainable for both of us, for the cedent and for the reinsurers as well, because that is what is going to be the long-term model. And we should always look at the long-term rather than having, these short-term gains in mind. The next one, of course, is technology. I need not speak about this much because there would have been enough sessions and there will be more to follow. And thanks to the chocolate box, of course. So I'll not dwell upon this. But now this is the one that is possibly tuned with what we would be looking at for supporting. So the support is not for the next 3 years. The support of GIC will be for the next 30 years.
But then what do we want? We want the cedant to retain. Retention in the sense that he should have an equal amount of skin in the game. That is important because in the past we have seen that this was not the case, and that is what prompted GIC to take some very harsh measures. Not very palatable for us as well. We are not used to it, but we were compelled to do it because of the circumstances. And that is what has resulted in the turnaround. So the retention of the cedant is important because if it hurts us, it should hurt you as well. That is when you feel that no, it is a partnership and we have to move together. The underwriting philosophy, of course, you should have a strategy going forward so that you adhere to it. This is something pretty standard. The historical performance of the cedant, there are many cedants who have invested quite a great deal in not only the personnel but also on the ground realities, in technology. Those cedants are the forward-looking cedants that we would really want to partner with because that is tomorrow. Technology is what is going to drive the scheme as we move year on year, and this is the important part. There is an annual review clause which we put because you can't have the same rate going forward for 3 years or even 5 years. We have other cases where we have 7 years as well, especially in engineering projects. But then there is a review clause which we would like to put. The timely account settlements, this is very important because the cash flow in crop is, as it is very, very minimal. We do tend to, balance out our book by getting our investment profits and churning it into our underwriting so that we have the benefit of giving lower rates to our cedants. That is why the timely account settlement and the cash flow becomes important. Of course, CCEs are rare. I mean, the case where, the premiums are important, but the CCEs are much, much more important. Diversification achieved in the underlying portfolio, as I said earlier in my first slide itself, the diversification is the key. That is what is the basic tenet of reinsurance. Adoption of a proper pricing methodology, corrective measures in case of inadequate pricing, and we would like to put in a loss cap ratio. So these are the asks that we have. We of course fine-tune them as we move forward, depending on the cedant. And if all these conditions are fulfilled, then to use the dialogue from Diwar, uske baad mere bhai, tum jis kagaz pe kahoge, hum us kagaz pe sign karenge. This is the way forward for the upcoming tender cycle. I spoke about global warming. El Nino is getting a lot of traction now. People are talking a great deal about it. The hurricane season that hits North America, especially the Florida area, doesn't help. I must put in a word here about the 1st January. So reinsurance cycles essentially are 1st January when the global book renews, and the second one, which is more for the Indian market, is 1st April when the Indian book renews. On 1st January, the reinsurance trends were pretty horrible. Horrible in the sense for the cedants who purchased reinsurance, there was an enormous amount of increase in price. The increase is not only, the price increase and you can go and buy reinsurance. The availability of reinsurance also was at a premium. So you had a double whammy really. And the London market, we actually saw a bloodbath on the 1st of January. In fact, we have our own syndicate at Lloyd's on the 23rd of December, and their program renews on the 1st of January, like everyone else in the global market. On the 23rd of December, I rang up my active underwriter, Mr. Neil Atwood, and asked him, Neil, how are the terms that you have got? How are they looking? To which Neil sounded absolutely despondent and said, Devesh, what terms are you talking about? I haven't even got the terms. So that is how hard the market was. And in the 1st April renewals, which have just been concluded, crop doesn't form part of it, crops comes thereafter. But the other parts of the book, which is property primarily, another casualty as well, property primarily has seen a huge amount of increase in the price of the treaties that were given out by the reinsurers as a whole. It was not GIC alone, it was all. So the market has now moved to a very different level thanks to the Ukraine war, thanks to the inflation that's happening in Europe, thanks to the march of the dollar. All these factors put together have really put a huge amount of strain on the reinsurers' books, and they are not giving out capacity very easily. So this is something that we have to consider. But as I said earlier also, for us, we are here for the long term. We will definitely be looking at the cedants that we have partnered with for so long. Even now going forward, GIC is always happy to open out its books and partner with the Indian market, because as a national reinsurer, we do feel that we have that, onus or that burden that we cannot really a burden, it's a labor of love that we carry for the market. Because as I have always said, for all other reinsurers, India is just a market, whereas for GIC, India is the market. This is the place from where we get all our
our muscle, our standing in the global sphere going forward. And one last bullet, which is an ask really from the CEO, sir, that, sir, we really would like to have the reinsurers also admitted to the NCIP portal, because that data helps us also not only pricing but also in settling the claims much, much faster for the betterment of all. If you could please look at it into, sir, we'll really be grateful. That's very, very kind, sir. It's really very kind. And with that, I thank all of you for your time today in the morning. Thank you. Yes, please. Yes, please. Go ahead, ma'am. Hello, sir, can you hear me? Sir, there were certain asks in the slide prior to your last slides. It says ICs should have proper pricing methodology. So what exactly GIC expects from the insurance companies in the name of proper pricing methodology? Because that's a concern which all states have, and we would like to hear from GIC, what does GIC advises to all the insurance companies for proper pricing? Just want to be, I think we need more elaboration for that from your side. Yes, sure, ma'am. So for all the clusters, based on the historical data that we have, we give a certain price range. Is that fine? Is that the correct way, Rath sir? That if I would request Mr. Rath to take up that question, please. And that is how we give these indicative rates, ma'am. Hello. Yeah. What GIC look at is on the basis of past 10 years yield data, whether the pricing has been taken at what PLR ratio, probable loss estimation ratio. So that should range, gives us a feedback that in addition to giving a margin of say 2% or 5%, at least it should be meeting the 10 years of burning cost with the other expenses. So what price is, usually it ranges between 75 to 85% of the burning cost price. There's a proper process involved. How do the states ensure that that the proper methodology has been adopted by the insurance companies while quoting the prices? Excuse me. The cedents comes to the reinsurance company quite in advance. They are already, their programs are already in place, and they have already been advised what should be the pricing range or what is the pricing that they got from the reinsurers. So on the basis of the price they are getting, on the basis of the terms that is being given to the insurance companies, they proceed to the domestic market in quoting their price. Thank you. Yes, sir. The answer to the query was that cedents have been informed about the rates that should be within the range they should be operating. Why these rates are not open to the state governments also? Why this information is restricted only to the cedents? Okay, so you are saying that we should be publicizing these rates so that even... At least the state government should know. I am not saying that it should be publicized openly, but at least the state governments who are floating the tenders, they should also know. So again, Mr. Rath, if you can. Again, this is agreement nothing but a policy copy between an insurance and a reinsurance company. Just like a policy, you are not going to disclose the policy copy that you are purchasing from an insurance company. It is the agreement or contract between an insurance company and a reinsurance company. That's why it is not being disclosed to the states. See, that happens when you are operating in an open market, where there are professional secrecies and all those things are there. But where there are public funds are involved, it is better that states are aware of what is the rate that what is the comfort level that reinsurer is providing. So it will help the states in finalizing the tenders quickly, and this will smoothen the process. That is the argument. Let me further clarify. The pricing is not
as such that you should charge 15% or 16% price that you are expecting. It is not the price that is what quoted to the insurance companies. What we say is a broad guidelines on the basis of what PLR ratio they should quote. It is not that we are asking them that you quote 15% or 16%, that reinsurer doesn't say. They say that whatever that loss analysis that you are giving over past 10 years data and whatever the factors that you are arriving at, you should arrive at a range of PLR based upon which you should quote. We are not telling them that you quote 15%, 14% or 10% that way. So moreover, our support is on quota share proportional basis, that is quota share capacity. The other they protect their net also on the basis of stop loss arrangements. So they usually each cedant buys two types of protection. One is quota share or proportional basis, the other is stop loss arrangements to their net retention. Mr. Just we have seen that in the last tender cycle when some states had gone for tenders, then some states approached Government of India for a kind of actual, I would say, analysis of what prices have been quoted in a cluster. And when we got that analysis done, it was found that the quotes were high and they were brought down after, I would say, discussion. So this leads to a lot of loss of time. So what, what advice can GIC give to the other insurance companies that such situation doesn't arises? I would say that it is always you have the cedant who goes and quotes the price, taking their profitability into account. Whatever we quote is that we have a margin and we want them that they should quote between a range of PLR methodology. That's all. We are not quoting anything. As I said, we are not quoting a price for any cluster that way. We give them for the entire portfolio how they should behave. Suppose they are participating in 10 states and even 20 clusters. We do not tell them that you quote for this cluster this price. We say that overall, wherever you are participating, your portfolio should range between your PLR should range between this range. I got your point, but still instances have been arising. So just if GIC can help out in that. See, we are not the only reinsurer currently leading the program. Usually the lead reinsurer. Now Munikri is leading almost in 5 or 6 companies this year. So they will be pricing that. See, it's not blaming GIC. You must understand what we are requiring. The range that you are prescribing to the cedant companies, at least if you are aware of that range also, that will help us in making the process quick. And it's not only for GIC, it's for all the reinsurers. As I said, we are not giving them any rate. I am telling them. You just said that you prescribe that they should be quoting within the range of PLR. Method, yes. What PLR they should ask, they should quote. If they are quoting at 60, 65 PLR, that means they are keeping a margin of 35%. That should not be there. So what I am telling. I am giving them 75 to 85 or 90% range. So if they can quote at 90% range, then their PLR will be or the pricing will be less. That is the, so they have the option. So it is they who have to execute that. I just take the liberty of clarifying it. GAC being the national reinsurer, obviously they have the major chunk in the reinsurance business. We do have another 12 FRBs, foreign reinsurance branches, which are operating in India. And GAC also takes back-to-back support also from the other foreign reinsurers, and might be from, there are around 280 CBRs are there who actually give the capacity to Indian market. So, and at the same time, the rates are dependent upon how much retention capacity which insurance company wants to do, and what is the risk assessment they do. And all these things, not that simply only reinsurer gives the price, but it is also their risk assessment, their retention capacity, all these things also work in play in the pricing part. Obviously, they are in the competition to bid they are in the tender process. Probably there could be some secrecy also they do maintain. Thank you. I think Deveshi, what the sense of the states which I am getting from MP is more towards knowing, as you said, as you rightly pointed out, that it is reinsurance is the tail that is wagging the dog in this case, and the prices are set basically basis whatever the quotes are given by
not only you, but other reinsurers as well. So can we sort of, I mean, this can be thought through. If it can't be shared with the state because they are calling the tenders, or can a mechanism be developed where the central government acts as a fiduciary, and so at least we sort of keep a eye on whether the courts are going wild in a particular state, what kind of actions could be taken to moderate that, because we have had that experience in the past. So maybe your team and we could sit and find a way on how to ensure that the courts don't run wild without any basis. Sure, sir. We are happy to sit down and examine it, sir. Definitely. Because as I said, we are committed to the scheme. Absolutely, sir. Sure. One small point I want to make. This concern has been there with the states for many years now regarding the pricing mechanism. In fact, it discouraged many states and they opted out of the scheme primarily for this reason. Since we've seen that Government of India is now trying hard to bring states back into the crop insurance portfolio, it's very important that some transparency is brought in, some SOPs are put in place, so at least these concerns and apprehensions of state governments are addressed to the maximum possible extent. Perhaps a mechanism where pricing could be examined. We were doing it initially and we are still doing it informally for the states. There could be a more, I would say, a formal or structured mechanism to look into it, where GIC could also be an advisory role to the state governments. Primarily, once you set up the PLR 75 to 85%, do you not support them if they operate on lesser PLR? That is also an issue. The other part is regarding the price cap of 250%. Is it only for one cluster, for all clusters combined for which you give support? All combined, then it's fine. All combined. But smaller companies who quote for only one or two clusters might find it difficult to basically justify to the board that they should be in crop insurance if this clause is in place. So there you could re-examine that clause as well. Mm-hmm. No, but as I said, sir, we are happy to sit down and put all of our heads together for the benefit of the scheme. Most certainly, sir. Thank you. Thanks, everyone. Thank you so much, sir, for your insightful presentation and answering all the queries. So now we will move forward with our today's first panel discussion on finalization of SOP and preparedness of Mitra for implementation of YesTech and WINS. We have with us a distinguished panel of experts in the field of agriculture and technology who will share their insights on the role of technology in crop science, insurance, and how it can be used to enhance the effectiveness of the scheme. Director MNCFC Dr. C.S. Murthy will be moderating the panel discussion along with the panelists. I would like to name the panelists now. Dr. V.M. Chaudhary, Group Director, NRSC Hyderabad. Dr. Bimal Bhattacharya, Group Director, SAC Ahmedabad. Dr. Vinay Sehgal, Principal Scientist, IARI, Delhi. Dr. A.V.M. Subbarao, Principal Scientist, CRIDA ICAR, Hyderabad. Dr. S. Palanivelan, Director, WTC TNAU, Coimbatore. Dr. Dharmendra Singh, Scientist, HAR SAC, Hisar. Dr. Pravat Kumar Raul, Vice Chancellor, OUAT Bhubaneswar, joining us virtually, and Dr. Prasenjit Mishra, Dean Extension Education, OUAT Bhubaneswar, also joining with us virtually. Can we have a round of applause, ladies and gentlemen? Over to you, sir. Thank you very much for this great opportunity to me. I am sure the three major technology interventions, YesTech, WINS and Cropic. So these interventions are ready to take off. The year 2023 is the year of transformative crop insurance solutions in India. So towards ensuring perfect takeoff of these major interventions,
particularly the yield estimation using technologies. We at Ministry of Agriculture, we have evolved a structured approach or structured mechanism which is very inclusive in nature, protecting the interests of all stakeholders, and at the same time realizing the intended benefit. So the modeled yields or technology driven yields are to be blended with the current system of crop cutting experiments. We are not going to dispense with the system. For some time we run it in a parallel mode. We honor that system. So these blending ratios also have been proposed, at least 30%, and some financial arrangement has been made to implement this major intervention. I think this is a very big intervention that is going to happen in 2023. So in the structured mechanism, we have roped in the knowledge centers in the country, where this knowledge is existing and who can steer this program. So in that setup, maybe next slide please. So these are the important stakeholders under a STEC implementation. The TIPS, the technology implementation partners, TIPs, followed by MITR, the mentor agencies. They play a very, very important role here because you are the knowledge centers, you are the people having the knowledge with you, and your help, your support for this program is very, very essential. Of course, the states who implement this scheme along with insurance companies. Therefore, to fulfill the requirements of state and insurance companies, TIPs and MITR will work. As per the guidelines, the STEC manual has been prepared in a very, very collaborative approach by taking the views of all stakeholders, not only from the technical agencies, but also the concerns from insurance companies, states, and administrative angles and everything. So, we expect that these models are implemented as per the manual with the help of MITR. The role of MITR is mentor, monitor, evaluate. If any non-compliance is there, you set right, mid-course corrections, of course, by honoring the views of state and insurance companies. It is a completely inclusive approach, and nothing is one-sided here. So there is an STEC committee constituted at the apex level, and STEC secretariat is at MNCFC. STEC secretariat will closely monitor all these things from time to time. Whatever the non-compliance issues and all those things, we try to correct those things. Since this is the first year of these major technology interventions, we have taken due care to ensure that this takeoff is very, very smooth, very, very effective, and very, very efficient, so that everybody is benefited in the whole insurance chain. Next, please. Yeah, briefly, these are the responsibilities of MITR. You associate with the TIP, you mentor them, evaluate, and closely monitor, interact with the states, and if any concerns are there, you resolve them at your level. If they are not able to be done at your level, refer to STEC Secretariat, MNCFC, and we bring some more things and then try to settle the things as usual. And as such, you all know as knowledge centers, for rice and wheat, implementation of these models is feasible technically, it is viable economically, because we are doing 30 years of remote sensing for rice and wheat. At least this is the right time. I refer to the words of Professor P.K. Agarwal, who is a legend in crop simulation models. A few months back he told us, I was waiting for this day of implementing these models and making them effective end use of these models. So I think it is a great inspiration for us from Professor P.K. Agarwal. So now let us go for a takeoff for these things. So we have identified certain agencies where this knowledge is available.
Of course, the Indian Space Research Organization, ISRO, and its associated centers, the Space Application Center, National Remote Sensing Center having its offices at Hyderabad, Bangalore, and Kolkata and other places. Of course, the Indian Council of Agriculture Research, ICAR, who developed these models 20 years, 25 years back, along with Professor P.K. Agrawal, Professor Patak. I think they are continuing that legacy. The ICAR is a big hub for these crop simulation models and other kind, even nowadays, even machine learning models. So the Indian Agriculture Research Institute and CRIDA and some of the state remote sensing centers, they have this capability. They have proven based on their research studies, published material, and Space Application Center of certain states. So we have identified this list. Now we request the feedback from these agencies. So the STEC manual was already circulated to you. So now what is your viewpoint in this takeoff? If there are any critical points, we try to address them and to include that into the process. So in this connection, I take this opportunity to invite Professor Vinay Saigal from IARI to give his views. Thank you, Dr. Murthy. A very good morning to the House. At the outset, I am thankful to the organizers for inviting us to this very important 9th NRC. I am Vinay Saigal. I am Head and Principal Scientist, Department of Agricultural Physics of Indian Agriculture Research Institute, PUSA, which you all fondly know. A pioneering research institute which has provided so many varieties of main cereals, food crops, fruits, flowers, vegetables. Besides that, doing a lot of research in pathology, entomology, soil science, agronomic practices, and generating various agricultural implements. But you may remember, many of you might not be knowing that IRI has been also a pioneer in use of remote sensing technology in agriculture. We started researching this subject way back in 1969 with ISRO, NASA, for the famous coconut wilt disease experiment. So our legacy, our teachers have started this long time back, and we have been partnering with ISRO in earlier, what we call it as defining the sensor specifications when our earlier in IRS 1A, 1B were launched, 1C later. With that, I would say that we are, if Dr. Murthy can confirm, we have already confirmed to the MNCFC that we would like to, in principle approval we have taken from our organization IRI to act as a MITR or Mitra, as it has been said, friend, to this program of Pradhan, Mantri, Fasal, Bima, Yojana. We had our internal discussions. We have our own project monitoring and evaluation cell where we put up the proposals, and we have identified 3 departments: environment science, agricultural economics, and agricultural physics, where agricultural physics would be the nodal or contact department for undertaking any of these activities with the states. Now the thing is that whatever approval we had taken, that was based on whatever document was shared to us in February of this year, and latestly April it has been updated and new SOPs have been also put into that. So there are certain concerns actually of us when I had gone through the new SOPs and the document which has been shared only. I could see yesterday evening only. I would request, my first request to MNCFC Dr. Murthy is that I think there should be ICR represented in the YesTech committee at the highest level, because it is, I feel there are more technology partners and less of people who understand technology and agriculture together. So that could be considered. Now, what I see when I go through these SOPs, the Mitra, what we understood as the name says mentoring institute, means you have an agency who is going to undertake some work and then you nudge him, you see how he is doing and how to improve on his results. But seeing the SOPs, I find we have not only to mentor, we have to verify, we have to educate the disputes, we have to also evaluate and sign to say that whatever results have been there, these are okay as per the SOPs and they are
scientifically correct. So it is a much more bigger role than what we had earlier thought of as a Mitra. And not only that, the SOP says you have to be a trainer also for both different stakeholders, including TIP, state officials, and any other stakeholder who come in that. So it brings in another additional responsibility. So my request is that whenever the states, you make it kind of mandatory, or it may be understood that whenever states are going for floating of tender, at least before floating of tender and finalization of tender, they should actually have a MITR on board, because I feel that once MITR is involved in end-to-end process of this whole scheme, he should also be part of the process where to identify which model for which crop, which area, which district to be taken in discussion with states. So that is what I think we should be looking at. Then there is one thing which has been written in SOP is that some sample data is to be given to MITR to evaluate the results which TIP is submitting. But I say that for the number of districts and for that particular crop and for that scheme for which MOU happens, if required, I don't say we need it, but if required, we should be allowed full access to the data, which we can give an undertaking that we are not going to keep a copy of that, but it is only needed to verify and to improve on the methodologies. Another important thing is that at Indian Agriculture Research Institute, and now my sister institute from CRIDA also, we are going to be part of a global mega university of India, where we have masters and PhD students, and they are our real strength. So when I have taken approval from my organization, one of the conditions which I have put that we will get access to the data which could be used by our researchers to improve on the models. But the SOP current says it cannot be used unless specifically taken permissions from Tech committee, but I would say that you should allow for research to improve on the models, methodologies for researchers like PhD students. Another thing is that at ICR level, if we have to do MOU with state government, it is easier. It is a government organization versus government organization. But once a TIP, who is not a government organization and the industry, we have a separate system of doing a MOU where we have ICR guidelines of 2014 and we have to enter into a contract research kind of system where we have to specify how the IPR is going to be shared, who will be owning that, what knowledge we are going to transfer, and then we need to get compensated for that, those intellectual property which we are going to transfer either to TIP, which is from industry. So on the other hand, given so many responsibilities and such a system, the SOP says that it should not cross 10% of the cost per district. So your responsibilities are large and your compensation is too low. I think this will not do. This will practically not do. Let it be left between the Mitra and the state to decide on as per the requirement. There may be some areas, some districts, suppose I am doing in Haryana, Punjab, which is closer to access to me to travel, a less cost may be needed. But if it is in Andhra Pradesh, or if it is I am going to Chhattisgarh, my cost of travel and team is much larger. So those things to be also taken care of. And somehow in SOPs I am finding that there is more centralization of power to the Tech committee. I think we should democratize it and don't, wherever Tech committee is really needed, only there the power should be centered and their intervention and approvals may be needed. Like what a state is going to compensate to Mitra, why Tech committee should be involved in that. So these are my initial thoughts, Dr. Murthy. But what I say at the end, that we are very looking forward to partnering in this venture along with my other colleagues, and we will see, actually we will also learn while doing implementation how our knowledge is going to be used in actual improving the scheme and bringing out the technology based yield estimates. Because I started way back in 1990. I started in ISRO, and since 1990, 32 years, it is really a great day to see that
the technologies which we worked on when the satellite data, the weather data and models were very primitive, computing power was very low. Now they have been getting mainstream into a scheme like PMFBY, which is really useful for the farmers. Thank you. Yeah, thanks a lot, Dr. Saigal. I'll quickly, some points I'll just clarify on this. Point number one is that, yes, okay. So, JS says this rebuttal can be done at the end of the session. We'll do that. Now I invite Dr. Subbarao again. He is from ICR things. What is your viewpoint on this? Are you prepared and to act as Mitra agencies? And if so, what are the models and what are the states you are going to support? Good morning, all of you. I am Dr. A.V.M. Subbarao, Principal Scientist in All India Coordinated Research Project on Agrometeorology, working at Krida, Hyderabad. And this is the first instance we have started following this PMFBY. And in the beginning, we have started threshold values for different crops and other things for supporting the insurance companies. We have trained AIC personnel for that. Now, coming into this particular aspect, I fully endorse Dr. Saigal's viewpoints because we are all involved in ICR. And second thing is, we have yet to take the permission from the higher authorities, and now definitely we would like to participate in this particular aspect. And we are having a multidisciplinary team in Krida, and we are not like the deemed university capacity. We are particularly looking at dryland agriculture research, and our AgriPalm is doesn't have the boundaries. We are working both in agriculture and irrigated and rain-fed areas. So our specialty is we have 25 centers across the country, and experimentations also taken up in those areas. Particularly in rice, we have 11 centers, and wheat, we have the entire north. So data and other things, we don't have any problem, but only thing is the concerns raised by Dr. Saigalji is endorsed by us, and we also would like to participate in this particular FMBS because we appreciate the technologies that need to be scaled up in this particular PMFBY program so that the accuracies will increase and the farmers will get benefited. So, thank you. Yeah, thank you, Dr. Subbarao. Now, let me move to Indian Space Research Organization. I invite Dr. Bima Bhattacharya, who has a very rich experience in agriculture, crop yield estimation. And please tell us what are the models you are going to mentor with the agencies and any coverage, any states, how many states you are going to support. Good morning. Good morning to all. I am Dr. Bima Bhattacharya. I am Group Director of Space Application Center, ISRO, Ahmedabad. And as you know that SAC, Ahmedabad, has a legacy of the agricultural applications with satellite remote sensing and carried out a lot of prestigious projects of the country like Fasal, and it culminated into the establishment of MNCFC. So we have participated for last few years in the pilot studies under the PMFBY where different models have been tested, and what we have seen from our experience that the out of this direct approach model, semi-physical model actually is relatively simple in nature,
However, it retains the overall crop growth variables that actually lead to the yield. And we have the team of scientists, and I have discussed with them, and they have given certain observations on the SOPs that anyway I will circulate it to Dr. Murthy through email. However, when we have given some critical look on these different aspects of the model, I was just going through that how many input variables actually are requiring for different models, because that will have the bearing on the preparedness of the TIP as well as the data processing and the accuracy of the yield model. So I have seen that semi-physical model requires only 6 input variables. However, AI/ML model CSM requires around 20 to 22 variables, input variables, whether dynamic or static variables. And when you go for the ensemble, again things become much more complex. So I suggest state, so you be rational and judicious while selecting the model, or sometimes state agriculture department may not be so wise to take decision on that. So you please consult with your state remote sensing application center, or maybe some TIPs whom you are thinking of opting for this work, and the TIP and MITR should be selected in such a way so that there should be right pairing, because MITR, certain MITR is having expertise in certain models, and the TIP should also have similar kind of experience. If right pairing is not done, then this scheme will have lot of problems. Suppose I am from Space Application Center, we would like to offer as MITR for semi-physical model, so I would expect the TIP who is coming or opting as the MITR should have the similar experience in that. So this is the overall things regarding the SOP. But another part is that the risk calculation factor, end of season risk calculation factors, when I was going through the lookup table, I have seen that there are a lot of arbitrary slabs, that reduction in NDVI corresponding to reduction in this much of yield. Some more scientific basis is required, or else we should look forward to the cropping, like this crop photoanalytics and all these things to come at the crop loss factor, because in this PMFBY scheme, crop loss factor plays very, very important role apart from the different crop models. Now regarding the execution part, yes, in principle Space Application Center is ready to provide support as a mentoring agency for different TIPs. Now this TIP of two kinds, as Professor Saigal told, that government and non-government. So for non-government we have separate kind of system of MOUs and all these things. But for government we don't have any problem, we can directly work together. We have earlier also worked with different state remote sensing centers and different state agricultural departments. So now the allocation of the fund, what Professor Saigal also mentioned, that it should be relooked into because 6 to 8 lakhs per district, I think it is little bit marginal in nature. So that needs to be looked into. And so far the coverage is concerned, where we can provide support, that regarding the Kharif rice, we can take up 2 to 3 states who are interested, like Andhra Pradesh has shown interest. Today morning also I talked to Assam, they have also shown interest. So similarly for wheat crop also, we are connected to Rajasthan, and maybe Punjab also can take us as a MITR. So what I would like to convey is that before tender cycle, the state government should contact us, whoever are interested, so that we can have fair discussion along with the TIP on board,
and to see the actual modalities of the implementation, and if some official procedures like MOUs and all these things are need to be done, so those need to be finished well before the Kharif season started. So, in addition to that, what Professor Saigal has told, that access to the data, full data if needed, that is also one very crucial point, and maybe for further research and the improvement of the model, that is also very much required. So, we extend full-hearted support for this MITR and this well-structured ESTech implementation. So, thanks to Dr. Murthy and MNCFC and the whole PMFBY team for giving us the opportunity to be part of this ESTech. Thank you. Yeah, that's great. Thank you. And then I now invite Dr. V.M. Chowdhury from National Remote Sensing Center to share his views, his preparedness, the preparedness of NRSC. Yeah, thank you, Dr. Murthy. It's good morning to all of you. It's very good. I'm very happy that the pilot studies initiated in 2019. I think I should remember that we should take Dr. S.S. Ray, who is no more here, and then Ashish Bhutani sir, that was initiated, and now it has came to a shape as a national rollout under the dynamic leadership of Ritesh ji. Thank you. And then coming to this particularly implementation of remote sensing technologies. As you know, NRSC being the National Research Center, Remote Sensing Center, which has implemented these technologies in the past and also implementing it. We have been implementing already GeoICTs, integrated these GeoICT tools along with remote sensing and weather-based data-centric tools towards agriculture applications. 2018, we have been partnered with Maharashtra government, you know very well. Dr. Murthy's, initiated that project that time. So, with the Maharashtra state government, Dr. S.N. Das is also there that time, state director. About 3 years, we have initiated the project where we have taken up all the tools like crop surveillance, crop inventory, crop simulation models, where we have used simulation model. Basically, in the 2018 to 21, we have taken up these studies as a pilot mode. So the technologies that has been developed during probably this Maharashtra is the first state who has taken actively for initiating these things, implementing these digital initiatives using remote sensing technologies. The technologies developed in the 2018 was being operationally being used from the 22 Kharif season, where we are being for cotton, soybean and paddy. Crop simulation models have been used for these studies. And after the success of this project, Madhya Pradesh government also been initiated this year, especially for paddy and wheat and gram, soybean also for Madhya Pradesh government we have been using machine learning algorithms also. Apart from that, we have been partnered with AICL also, where we have been using CSF technology and implementing at West Bengal. So obviously, we being NRSC having experience of more or less all the technologies. So for operationally, we have been implementing some of the states, and then recently Karnataka, the Principal Secretary of the Civil Service is also there. We're also been going to partner with Karnataka, and then Orissa government also been going to partner. So we have got the lot of experience, and then we definitely will be happy to share our experiences, maybe through capacity building and all the activities. Coming to the role of MIT, already we've been MIT for 4 states. And if some more states comes, definitely will help. But only issue is, I completely agree with some of the points raised by my presidents like Dr. Vinay and Dr. Bimal. So some of the issues to be addressed, so that we can discuss those issues. And then positively, NRSC is also positively considering all these activities, and then definitely we are there with that. And what all the possible support that we need to extend to all the state governments as a MIT definitely will be there. So only some of the issues like we've been being small, it's not that it's because we need to take up the load for the entire country, but some of the states at least already we've been partnered with 4 states, taking up additional load, whether we are really, that point of, we have been thinking whether to take up additional load apart from these 4 states or not. That was the only reason that we are not able to give consent yet. We have been thinking, exploring the extent of the load, what we are supposed to handle. And one more thing in MIT,
some of the statutory measures like imposing fines on the tips, so that kind of things may not be with research organizations, may not be in a position to impose fines. So some of those clauses can be looked into by MNCFC or maybe the PMFBY team. So this exercise can be taken over by the PMFBY team, the imposing fines, which should, some of the things should be taken away from the midst, some of the things. So thank you very much, and then we are there for that. Thank you very much. Yeah, thanks a lot for that explanation. Now I request Honorable Vice Chancellor of Odisha University of Agriculture and Technology, OUAT. In fact, in the year 2017-18, when I was in NRSC, we encouraged OUAT to set up a geospatial technology center. And at that time, our director NRSC and myself, we went there and the center was established. I am sure that center was working very well. Dr. Bharat Sahu was there at that time. And I think now also he is in charge for that. Now I request Vice Chancellor OUAT to give his view. Yeah, good morning to all esteemed colleagues. Really it is a privilege. Though I am out of Bhubaneswar, I took it to join from a remote place. There may be little network difficulties. But as it primarily appears to me, unconditionally we are willing to act as the mentor institute. It is rather a privilege for us. And as rightly indicated, the Geospatial Technology Center that was established is doing quite well. Recently, we also conducted one summer school with the support of our state government with funding, and also resource persons from different institutes were invited, starting from NRC up to IRI and also IITs. That has also strengthened and reaffirmed our strength in respect to geospatial technology. So we are ready to take up it, and moreover, being the lone farm university in the state, public funded farm university, and we have also existence in all the state with multiple establishments. So no space in the state of Odisha is inaccessible so far as Odisha University of Agriculture and Technology is concerned. As it appeared to me, as a mentoring institute, we have to go for the verification of information, evaluation, authentication, and we are also ready to do that. And moreover, whatever financial implications are there, whether it is less or more, so we will try to take it up appropriately with the state government. So this I conclude with the profuse thank for giving us the opportunity, and also commit that we will take the things ahead. Yeah, thank you very much, sir, for that comments and your feedback. I request now the Tamil Nadu Agriculture University, Dr. Palani. I think they have already implemented these models and they are associated with the crop insurance for many years. So what is your preparedness, Dr. Palani? We would like to hear from you. So good morning to all. I am Dr. Palani Velan, Director, Center for Water and Geospatial Studies. So Tamil Nadu Agriculture University is pioneer among the state agriculture universities in establishing the exclusive department of remote sensing and GIS, and we are working in the crop models and yield loss assessment from 2012 onwards. Then with this PMFBY program from 2016 onwards, we are working closely with the MNCFC, then the State Department of Agriculture, as well as the Ministry of Agriculture. And with regard to implementation of this S-Tech program, already the university has approved the center to take up this task for any number of state, whichever is possible. And we have also established necessary infrastructure with advanced crop monitoring lab, with the hardwares as well as the innovative softwares. Regarding the crop growth models, so we are pioneer, and we are working very closely with the different agencies in getting the data sets available. So TNA is ready to mentor or to act as a technology implementation partner for the semi-physical approach as well as the crop simulation model. And further, whatever may be the agency, we are ready to host them or train them whenever there is a need for capacity building for the insurance companies,
then the technology implementation partners or the other agencies whomsoever involved. So, and we are also ready to be part of this validation and checking the outputs. And as far as the SOPs are concerned, already it has been discussed in detail in the previous workshop, and we have offered all our comments. And only one point in the semi-physical approach, that harvest index. So we are working on the, rather than working on the actual harvest index, we are working on the ceiling, how much it should be, the maximum harvest index, or otherwise it will lead to a lot of confusion when the claims are being made. That is the one thing. Other than that, we are prepared to take up both the assignment as insisted by the Ministry of Agriculture as well as MNCC. Thank you. Yeah, thank you, Dr. Palani. Now, I move on to State Remote Sensing Center, which has got this capability of acting as Mitra organization, and which has got very long-standing experience, particularly in the rice and wheat yield modeling, their association with ISRO. I think it is also one of the recognized knowledge centers. So, I invite Haryana Space Application Center. Now, what is your preparedness in the state to support the state for implementing this STEC? Thank you, sir. Thank you very much. As I have heard somewhere that the last have lot to learn and less to speak. So almost everything has been covered by all the panelists. But for Haryana point of view, I would like to say that we are fully prepared for implementing the STEC, as well as we are ready to train, and we are ready to give the technology transfer to the other organization, those who are willing to take us as a Mitra. So from my side, sir, if it is required, we are also planning to make a portal where all the primary data, at least, that will be used or that is used in the yield assessment, will be provided on that primary, all the primary data. And we are equipped with semi-physical model as well as the machine learning model. So those who are planning to take these as a model, so they can be with us, and we are ready to have some collaborative meetings so that it is easier. So again, sir, thank you very much. You all are my teachers. I am very young to speak on these matters, but thank you very much, sir. Bimal sir, Chaudhary sir, Segal sir. Those means by seeing them, I grown up, and I am sitting here. So that's it, sir. Thank you. Yeah, thanks a lot, and then it's fair enough. And any other government agency sitting in the audience who can act as MITR in PMFBY? Any other agency, government agency who can act as MITR? If so, they can volunteer and then put their views. So any other point from the MITR agencies sitting on the dais? Have you missed any other point? Sir, in SOP, I gone through and found that the clause 3.3.3, 3.3.4 and 3.3.5 all are having same meaning. So maybe checked once. Yeah, sure. Sure. And sir, you please send by email to us. Maybe some manuscript related errors, maybe they will rectify it. Thanks for that. Sir, You send to again, us. so sorry. The winds must have the clear financial this clause in that who will bear and all winds for winds technology, sir. Okay. And one more thing is the data sharing, as already has been. Okay, I'll come to that point. That should be open, Yeah, sir. I'll come to that point. Okay. Experts, any other missed point quickly? Yeah, actually,
CRIDA would like to participate in this particular aspect in capacity building, crop modeling, and then some research kind of aspects which we would like to take up, if at all. Thank you. Right, all right. So, thank you very much. Actually, you have given a very, very reasonable and wonderful points for us to address the gaps in the manual as well as the possible gaps in the implementation strategies. So, let me quickly put points, rebuttal points, give some clarifications. Some other points are just, I think there is some understanding gap. And quickly I want to say that, yes, STEC committee, we will include ICR as a representative, we will include them. So, I will request JS credit, we will move, take that one. And all of you have a concern on the data sharing. So, the point is that we have indicatively put 10% of the data, but to fulfill your responsibility as MITR, whatever the data you require, you are free to share. There is no limit of, restricted sharing. So, you can have the sharing for any kind of data to verify whether these models are being implemented properly or there are any other issues or kind of things for your evaluation purpose. So, there are no restrictions on sharing the data. But only worry is that you don't maintain a parallel data in your systems. That is what our worry. There is no need for maintaining such a entire data set as a parallel thing in your thing. So, we assure you that there are no restrictions in the verification of the data. And then this MITR associating with the tendering process. Actually, the STEC committee empanel the agencies based on their technical capabilities. So, all the STEC committee members, almost they are all the part of this process only. But we are also looking at empaneling all the agencies. There are certain agencies who have already carried out studies with the Ministry of Agriculture for the last many years. And these agencies are having the capability to run these models. So, technically they are capable. So, technical empanelment is done by STEC committee and it is communicated to states. Then they follow their financial rules and pick up the agency for kind of things. Now, another common concern is the MOU. I think you can have MOU with the state government. You need not worry about the TIP. You can have MOU with the state government. State government is engaging you. So, it says tripartite, very clearly. We will look into that, whether it is a tripartite and So the thought has been that MITR has been structured as a representative of the central government. So you must understand that the role that MNCFC was till now playing, it is being given to the MITR organizations to play in their respective states. So the thought is that MITR shall be appointed by Government of India. You have nothing to do with the state. You are a Government of India representative looking after the processes that are happening in the state level. So while you mentor, train, evaluate, certify and everything, you do it on behalf of Government of India. As far as the tripartite agreement is concerned, the thought process there is that since you have raised a very valid point that you should be involved in the process through and through. So even during the agreement itself, they should be aware, both the TIP and the state, that MITR has to be taken on board, and you should, being part of the agreement, have all the rights and duties and responsibilities built into that contract itself. So our thought is not with regard to making you some kind of a party to IP or other details. The thinking was to involve you in the structure of the agreement itself as representative of Government of India. So I hope I am making that clear. Yeah. May I respond? Yeah. Thank you for that clarification. Actually, the way the SOPs have been worded, it does not come out exactly as we are going to be representative of the central government. Because being a government agency working for central government, any agency or even with state government, we have a very easy way to do it.
But moment we have to enter into a agreement where a industry partner is there, my law department, my law section would come into play, and they would put up in ICR, we have already a published guidelines. ISRO may not be having, but we have a published guidelines how to go about it. So in actual implementation and taking permissions, we would be get into a very different kind of loop, which may take time. So we want to avoid that. Doctor, what I'll do is, I will specifically mention it in the guideline that you shall be the representative on part of the Government of India. And in that role, you will be part of the tripartite. I get your point, I have noted it down. Yes, yes. Sir, another just point, you have mentioned that central government agency should act as the MITR. But in the document, ESTEC document, there are certain state agencies also who have been recognized as they can also become the MITR. So, will that hold also in this? So again, to clarify, it is not our thought that that only central government agencies can act. Any agency which is a government agency which has the capacity and capability, like the Tamil Nadu Agriculture University also, if they are willing and have the capacity to do it, we will take them as a mitra on our behalf, one, but they will not be able to be a mitra for their own state. Yes. So Tamil Nadu University cannot act as a mitra for Tamil Nadu. They may act as a TIP, that's a separate thing. Thank you, sir. So, all right, I think many points are being clarified. Now, the use of data by within Mitra agencies, by the students and research scholars for your scientific bodies, but the only concern here is that when a data is given to multiple people analyze the data in multiple perspectives and you get multiple outcomes. These outcomes should not act as a contra to the scheme. This is the concern. Therefore, we have put some kind of a moratorium, some period. After that, the data will be free and you can use and you can develop the same crop model. So whatever you want, you can do that. But till that time, please understand the sensitivities in this, because this is something linked to financial kind of things. So that's why we put it. But some of the GT data kind of things which is not related to that, you can use in your studies. We will make it accessible to that. My point was, we may be allowed to use data for improving the model. We will do any publication after your moratorium period. No, but the results should not contradict the outcomes of the current initiative, and that should not lead to any ambiguity or confusion, create some kind of chaos. Yeah, our only emphasis is to improve on the methodologies, because this is why we as an institute are getting involved in this, to get access to data from the states, work with the state government and work with technology partners, so that we can improve on methods, models in time to come. How we are going to do that unless we wait for 3 years moratorium? By that time satellite technology, data models, computational, everything changes. So at least we should be allowed to work on that data. We may publish it after 3 years, whatever is the moratorium. We'll take a... So, one of the provisions that we have built into the guidelines specifically is with regard to doing a full-fledged data sharing protocol. I think your concerns are valid, and while framing those data sharing protocols, we can see if we can anonymize the data and put restrictions on, on issues that may affect the yield or the claim payout. So that is our only concern, and then thereafter we can think of... Claim payout, we are not concerned. We are only restricted up to final yield only, just. Sir, in addition to that, I would like to say, if we have fixed the model and we are estimating the same parameter with the same, same output parameter with the same input parameters, so I think input parameters may be shared and the final output should be restricted. So there is no confusion and no conflict. All right. We have to make, I think, apply some due diligence in this. And every one of us, I think we are equally responsible for effective implementation and takeoff of these kind of things. Now, with respect to some of the technical issues, technical aspects in the manuscript of the manual, I think Dr. Bhattacharya can
send those whatever your suggestions on the lookup factor to us by email, and we will incorporate. Similarly, if there are any other points from these things, they can send to us by email. I would like to just flag it with all of you, because you are all eminent people. We, as you have heard during these deliberations, the tender cycle is already on. Few of the states have already floated the tenders and all. So whatever we need to do, this document, Dr. Murthy and I have worked overnight on this and circulated it with the intention that whatever comments or whatever improvements that you want to give to us, you should do it within the next 2 or 3 days, because within a week or so, that's my target with my team, within a week, 10 days, I should be over with this document. And this is a request to all the stakeholders, states, ICs, reinsurers, all the stakeholders present in this room. We will finalize both these manuals within the next 7 to 10 days. So whatever you have to do, read them, give suggestions, whatever changes you want, please go through them. I will not accept hereafter that you come back 15 days hence or 30 days hence or just before the tender or in a pre-bid meeting के सर ये तो आपने ये clear नहीं किया. तो जो clarification चाहिए भाई साहब वो अभी ले लीजिए, अभी amendment कर देंगे, we will just issue them. And the conference itself has been structured in a way that whatever, teething troubles we are facing, we should settle them. So my request to you, specifically all of you, is to send those comments within 2 or 3 days. सर रितेश सर को मेरा एक सुझाव है सर, कानाराम कमिश्नर एग्रीकल्चर. सर जैसे आपने बताया कि दिस मित्र विल एक्ट एज ए सेंट्रल एजेंसी, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि फिर इनका जो फाइनेंशियल बिड है सर वो भी अगर सेंट्रल लेवल से फाइनल हो जाए एंड पेमेंट कैन डायरेक्टली मेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू दिस मित्र एजेंसी, तो स्टेट का काफ़ी टाइम सेविंग हो जाएगा सर इसमें. मित्र के लिए आप बिड मंगा ही नहीं रहे हैं, मित्र को मैं ही ऑन बोर्ड कर रहा हूँ सर, मित्र को पैसे भी हम ही दे रहे हैं. आपका कोई काम ठीक है सर, फिर विल डू ओनली एमओयू सर. आपकी कोई चिंता नहीं होगी, आपने टीआईपी रखना सर. टीआईपी भी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो आप नॉमिनेशन पे रखेंगे और प्राइवेट एजेंसीज के लिए आप टेंडर. अभी गाइडलाइन में सर कहीं फाइनेंशियल बिड का डाला हुआ है, इट इज़ नेगोशिएबल विद मित्र. हमारे साथ ठीक है सर, आपके साथ कोई नेगोशिएशन नहीं. Yeah, before I close the session, I just want some quick clarifications from audience. You want to pose anything to Mitra agencies? अभी मौका है, इतने बड़े लोग मिलते नहीं है पूछने के लिए. Good morning, sir. Hello, good morning, Murthy sir. I am from National Statistical Office, AS headquarters, Faridabad. So from yesterday, I am going through the deliberations, and I want to make some salient observations. Because NSSO has been spearheading this crop cutting experiment since 1950s. So it has a good amount of expertise over there. So one thing, sir, in the recent discussion, as we were discussing, that the mitra of one state cannot be a mentor to its own state government. So in this case, sir, I will like to clarify that for example, let me give an example that Tamil Nadu State Agriculture University, most of the pilot studies or most of the observations, the data collection, whatever it has done in the purview of Tamil Nadu state. But when it will be mentoring the state of Kerala, you will find that the general crop estimation survey guidelines, absolutely there is a drastic change in the state of Kerala because it is a non-land record state. So that will create problem because it has been somewhat conditioned to doing the type of experiments in Tamil Nadu. But in Kerala, it is absolutely different. Let me give you an example. For example, in case of coconut, in Kerala, sir, for a 5x5 plot, they only take bearing trees. While in case of Tamil Nadu, they have very elaborate system of garden. They have a separate revenue record of garden of each and every village. And further, the definition of garden is also varies between Kerala, Karnataka, Tamil Nadu. How many fruit bearing trees constitute a garden? So in such kind of confusion, I feel that NSSO Agriculture Wing Faridabad, it can act as a mentor to mentor rather than being a mentor itself. We have been associated with PMFBY since its inception in 2016, and it's working wonderfully under the leadership of earlier with Bhutani sir and now with Ritesh Chauhan sir. So for removing this kind of confusions, I feel that NSSO can provide its very important role in clearing the confusions.
So this is my first observation. Second observation is that, sir, in case of most of the southern states, they are having this separate set of experiments. Since now CCs continue to be a fulcrum of deciding the disputes, so it should be done in a more transparent manner, and more specifically, the CCs that constitute for the production purpose and its contribution to state GDP, that should be taken care of. Otherwise, it will create some sort of disturbance and discrepancies in the calculation of state GDPs, specifically in north states and other states where contribution of GDP is very high. So that is one of my concerns. And another concern that sir was yesterday talking about, Chauhan sir, was that integration of this e-survey. E-survey was something that was yesterday being talked about. So today, in today's current scenario, we have two kind of land records in all states, almost all states except in case of Andhra Pradesh, which is having this e-Krishak or e-survey. So they have integrated, sir, this land ownership, which is called as Khatauni in North India, and Khasra, which is called as a crop survey. So while integrating both these things, it is a very landmark thing, because it will be indispensable for having a very efficient system. But while integrating these two things, it is important that you follow the guidelines that have been stipulated since very earlier time. Let me give you a case of Andhra Pradesh. It has very wonderful structure, both in case of property experiment software. Its Ministry of Agriculture has opted it for creating a software for GCS also. But one thing that it has missed during the transition period, that they are not calculating this land use under non-agriculture utilization. So that will break the time series. So these are the observations I feel that NSO FOD continues to flag with Ministry of Agriculture, PMFBY, and we feel that certainly you should rope in our organization to clear the confusion that will arise in conducting this crop cutting experiment. So this is my brief observation from that I have gathered from yesterday. Thank you, sir. All right, all right. Actually, there is some understanding gap, I believe. Your NSSO general crop estimation service. Yes, sir. It is meant for different purpose. Yes, it's meant for PMFBY crop yield estimation is meant for some other purpose. Yes. Here in the STEC CMM1 crop model matrix 1, it deals with rice and wheat at GP level to improve the crop assessments for insurance claim settlements. That's all. So now the Tamil Nadu Agriculture University has got the expertise in these identified CMM1 crop matrix model 1 models. They have the expertise. Besides acting as TIP in their own state, they can also help other states, neighboring states as mentor agency. So for that, there is no need for what is the general crop estimation in Kerala, general crop estimation service in Tamil Nadu. I think this knowledge is not required. That's fine. So the third point is that your e-crop survey linking, I think this is outside the scope of this particular meeting. And eventually, how do we bring the complementarity between e-crop survey and CropX? That we will work it out separately in the ministry, and that we will do it separately. Okay? So this GCES is separate. You see it as a separate entity and a separate mechanism. Thanks. Any other comments from any other person? Yes, sir. But in Annexure 10, you have stipulated that the TIPs have to follow the GCS manual or the manual that has been given by the Revenue Department for 200 experiments for data calibration and validation. Sorry for interrupting you. Yes, sir. We are nothing to do with general crop estimation surveys and the manuals and procedures prescribed by NSSO here. Okay? Yes, sir. Any other, please? Dr. Murthy, what I see here that the other models which have been evolved in other states like West Bengal, where the NRSC is directly working with the state and the insurance company, and something new has come up. So in that way, this Mitra concept is very good. In such a way, the technologies which have already been developed by the research institutions, basically, they can be tested at the field and actually implemented, basically. So in that way, the Dr. Sehgal has raised some concerns, but I think those concerns can be addressed, and it's a very good initiative that the MIT going to the states and working with the state government and taking up the challenges of actual implementation. Thank you. Sure, sir. We'll address those issues what raised by Mitra agencies. We'll take into account. I request. Yes, sir, I fully support your point of view, because I am thinking Mitra is not to be a verifier, evaluator and handholder,
but eventually it should able to bring in new science into improving the model and results. So we should keep that a bit of a medium term goal also for the Mitra. So in fact, my request to all the Mitras will be that while you mentor 2 or 3 states, and it will be a sort of removed activity, looking at data, you just have to, tell them, evaluate it. I would request all of you, given your expertise and your access to knowledge, it will be better if you could be a TIP in 1 or 2 states also, maybe 1 state at least, because that then gives you the field level experience of running these models in the field also, right? And brings that experience to your mentoring role. So maybe pick up 1 state as a TIP and be mentoring 2 or 3. And as far as the money part is concerned, it is not a big deal. I mean, we understand traveling, other expenses. It's all negotiable. Murthy साहब के साथ बैठिए, जो ये आपके के साथ negotiate करके बोल देंगे, we'll pay for it. That is not an issue. We spend 16,000 crores in a year. I don't mind spending this money, enabling you to take this technology forward, because this is money well spent. But having said that, obviously it is public money. We have to be mindful of how it is being spent. Yeah. Thank you, sir. I want to respond on that point where you say we act as a TIP also. As you understand that there are very stringent timelines of reporting and implementing the scheme. And being agencies, we have lot of other mandatory activities to do it. So my take is that for 1 season or 2 seasons, we will act as a Mitra to understand how TIP is actually implementing, where we can be. But you may allow us that if any TIP want to keep it as a contractor or consultant in some other state where we are not Mitra, we may be allowed to partner that way also. Because there are some ground level things to be done where you need wherewithal, where you need immediate execution, permission and all, and our system is not that fast. It takes time. From the state's point of view, the supervisory role of Mitra must be there, because TIP is ultimately a private player, insurance company is a private player. If the two collude, then it's going to be a major problem for the states. So we would always like Mitra, being the government agencies, to have a supervisory role, because they have the technical expertise. The states do not have the technical expertise to go into the data and see whether the calculations have been correct or not. So supervisory roles must be there for the Mitra. I request Dr. Bhutani sir, your comments on this, your views. Dr. Murthy, I am happy that this entire initiative is seeing the light of the day. It has taken a lot of effort on part of the ministry to reach this level. We were groping in the dark, I would say shooting in the dark, not groping, shooting in the dark. And finally, some way forward has been shown, and I am happy that very comprehensive guidelines have come in place. With minor changes here and there, they are more or less, I would say, in sync with what was envisaged and what is now being pushed forward. States are, I would say, should be on board. Assam, I can speak for Assam and some other fellow states with whom I have been interacting, are positive about it, and we all agree that if a risk like catastrophic risk like crop insurance has to be, I would say, systematized and structured, there's need to migrate to technology. There are no two ways about it. And this scheme is unviable in next 5 years' time if we don't migrate to technology. We'll have to close the scheme, because it will become unviable for states initially. It's already become unviable for many states, and for government India as well. With the type of, I would say, system challenges which we are seeing, for which we have no answers. Only technology can provide those answers, and we start with a healthy mix of 70-30 and migrate upwards after that. I think it's a step in right direction, step in time, and we all support it fully. And wherever there are, I would say, requests for a more positive, I would say, feedback from the state, we will provide it. So we are all for it. That is my initial remark for the initiative of the Government of India.
Yeah, that's great, sir. I think we Mitra agencies, technology agencies, that is a great inspiration from a key decision maker in the government, like Dr. Bhutani. So where technology is the only way out today to ensure sustenance of crop insurance schemes. I think this is a good takeaway point for all of us. And in the first year, because this is going in a big way, we may expect small hurdles in the first year, but we can always find a way out for these things. I think with all collaborative and democratic approach and the more inclusive approach, I think we can make a very, very successful implementation of this major drive of STEC. So with these remarks, I declare that this session is closed, and thanks for all the Mitra agencies and overwhelming participation by all the participants in this session. Thanks a lot. Thank you all the panelists and Murthy sir for conducting this discussion, and thank you for all the questions. We now move forward to continue with our second panel discussion, which will be on the topic finalization of SOP and preparedness of technology implementation partners, TIPs for implementation of YesTech and WINS. The panel will be moderated by Shri Sunil Kumar, Assistant Commissioner, DA and FW. I would like to invite our panelists as follows. Dr. Pranay Panjala, Senior Scientific Officer, ICRI SAT, Shri Anuj Kumbhat, COO, InGen Technologies, Shri Yogesh Patil, CEO, SkyMet Weather, Shri Pratik Mehta, Senior Principal Consultant, Amnex Infotech, Shri Sharat Kothari, Director, Cropin Technologies, Shri Mahesh Kumar Vanzare, Vice President, Agrotech India, Shri Rajendra Reddy, NCML Limited, and Dr. Hari Prakash, Director, Quality Council of India, who will be joining us virtually this morning. Thank you all the panelists. Over to you, Shri Sunil Kumar. Thank you. गुड मॉर्निंग। ये हमारे आज का सेशन लास्ट सेशन है और शायद हम लोग इसमें डिस्कशन कर पाएंगे कि ये सारे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट्स का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम टीआईपी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स के जो एसओपी हैं ऑलरेडी सर्कुलेट किया जा चुका है और सारे चीज़ों का हमारे पास बहुत कम समय है, जैसा सर बता रहे थे। इसको हम लोग डिस्कशन करके हम लोग बहुत जल्द इनको पब्लिश करें ताकि इनको फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाया जा सके। तो एक छोटा सा ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑलरेडी आप लोग के पास सर्कुलेशन में है, लेकिन छोटा जो मेन पॉइंट है वो हम लोग ने इसमें प्रेजेंटेशन में डाला है। नेक्स्ट। जस्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे चीज़ों में कि मेन हम लोग को क्या है। थॉट ये था हम लोग का कि हम इस जो का क्लेम डेटा है उसको हम कैसे ट्रांसपेरेंट बनाएं। इंडिपेंडेंट लॉस असेसमेंट मेथोलॉजी की ओर जो थॉट था उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करें, मोरल हजार्ड्स जो हैं उनको हम मिनिमाइज करें और जो डेटा ट्रांसफ़र में है इफ़िशिएंसी एंड एफिकेसी को हम इसको कैसे इम्प्रूव करें। ये सारे चीज़ें हैं। आप कल से पहले से भी सुन रहे थे और कल से बहुत डिटेल में सारे डिस्कशन हुए हैं YesTech, विंड्स एंड क्रॉपिंग का। इसमें जो सेकेंड पॉइंट जो मेजर है, जो स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं, मेजर जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, इनका अलग अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट लाइक YesTech कमिटीज़ जो हैं वो हमारा जस्ट लाइक ए रेगुलेटर हैं, सारे चीज़ों को ओवरसी करने के लिए जो भी प्रॉब्लम आएंगे, जो भी मिड कोर्स एक्शन लेने हैं उनके लिए सारे जो SOP बनाना है सारा चीज़ उनकी है। स्टेट्स एज यूजुअल जो है स्कीम इम्प्लीमेंटेशन उनके पास है, इम्प्लीमेंट करेंगे और इनके लिए जो क्लाइंट होंगे वो अभी स्टेट गवर्नमेंट में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू होते हैं, उनके एजेंसीज़ हैं। अब इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं जिसमें से दोनों को लिया गया है कि हम या तो हम थर्ड पार्टी लें या गवर्नमेंट एजेंसीज ऑलरेडी कोई
काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो सकता है। तो इसीलिए है मित्र जो है नेशनल एजेंसीज होंगी वो ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होंगे, उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटरिंग का मेजर है। लेकिन टिप्स का जो है वो मेजर चैलेंज है कि ग्राउंड लेवल वर्क उनको करना है। सारा एक्सक्यूशन पार्ट जो है वो टिप्स पर है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग को देखना है कि जो भी डेटा कलेक्ट होता है, डेटा आता है, टाइमलीनेस है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो टोटल हमारे क्लेम सेटलमेंट्स पार्ट हैं वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको असाइन किया हुआ टिप्स का, उनके टाइमलाइन और अदर सारे चीज़ों पर निर्भर करता है। जस्ट लाइक ये ऑलरेडी हम लोग ने यस्टेक में टिप्स का इम्पैनलमेंट हो चुका है। क्योंकि समय हम लोग के पास बहुत कम है, टेंडर साइकिल ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स में टेंडर फ्लोट हो चुके हैं, रिमेनिंग स्टेट्स में सारे डिस्कशन स्टेट्स में हैं। उनको ज़्यादा टाइम हम लोग के पास नहीं था, इसीलिए हम लोग जो प्रूवन एक्सपर्टीज जो थे हमारे पास, जो पायलट जो लार्ज स्केल पायलट्स किए थे, उनको हम लोग इम्पैनलमेंट हम लोग इमीडिएटली किए हैं। नेक्स्ट इम्पैनलमेंट जो रिमेनिंग और टेक्निकल एजेंसीज जो काम करना चाहते हैं उनके लिए हम यूआई फ्लोट करेंगे। उनके लिए ये सारे बाद में हम लोग प्रोसेस चलेंगे, लेकिन इमीडिएटली जो हमको स्टेट टेंडर के जो टाइमलाइन है उनके साथ कोलैबोरेशन के लिए ये सारे काम किया हुआ है। इसके अलावा जो हम लोग यूआई की बात कर रहे हैं, यूआई ऑलरेडी हम लोग जो इनका क्या एक्सपर्टीज होना चाहिए, टाइमलाइन और अदर सारे चीज़ें का डिटेल हम लोग यूआई में डाले हुए हैं। ये सारे चीज़ें हैं। अब मेजर पार्ट्स जो टिप्स का जो है वो स्टेट के साथ काम करना होता है। स्टेट्स मित्र ऑर्गेनाइजेशन और इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर स्टेक होल्डर के साथ उनको रेगुलर टच में रहते हुए जो कलेक्टिव एक्सिक्यूशन करना है, जो वर्क प्लान होंगे उनके साथ करना है। इनके टाइमलाइन और जो एसएलए हैं वो हम लोग ने स्टिक थोड़ा सा बनाया हुआ है, ताकि इसके लिए, क्योंकि जो हमारे ऑलरेडी जो ऑपरेशनल गाइडलाइन PMFBY का है उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ का टाइमलाइन डिफाइंड है। ये पैरेलली है कि हम इल्ड डेटा हम वेटेज के साथ हम यस्टेक को इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारा नॉर्मल क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स चलता रहेगा। तो हम बहुत ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं कि यस्टेक कमेटी का ये जो डेटा है टेक्नोलॉजी बेस्ड वो लेट से आए और हमारे पास ये आए। तो दोनों वर्क को हम लोग ने पैरेलली करते हुए वर्क टाइमलाइन को थोड़ा सा असाइन किए हैं कि ये साथ साथ चलता रहे और क्लेम सेटलमेंट का जो हमारा साइकिल है वो डिले ना हो। जो हमारी जो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन का मेजर जो टाइमलाइन है उसमें कोई तरह का चेंजेस ना हो, इसी तरह से किए हैं। इसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जो इनको हम लोग ने वर्क असाइन किए, नीड बेस्ड बहुत सारे हैं और पूरी वर्क प्लान स्टडी दिया गया है कि जब ये शुरू में जब इनको अपॉइंटमेंट होगी और उनके बाद जब काम करेंगे तो पूरे सारे चीज़ों जो इनकी इनपुट मेजर चीज़ें ये है कि अभी हम लोग इम्पैनलमेंट किए हैं तो स्टेट्स का क्या मॉडल होगा, हम लोग 5 मॉडल में क्या मॉडल होगा, वो बहुत इसेंशियली है कि सारे स्टेट्स जल्दी से जल्दी फाइनल कर ले मित्र ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, ताकि अभी हम लोग इसमें फ्रीडम दिया हुआ है कि जो टीआईपी हैं वो मॉडल में कितने इफ़िशिएंट हैं, उनके जो इनपुट्स हैं उनको कितने जल्दी कलेक्ट कर पाएंगे और सारा जो टेक्निकल उनकी रिक्वायरमेंट है वो सारा चीज़ें नोन करने के बाद बीट करें। तो इससे क्या होगा कि कंफर्टेबल जोन में स्टेट्स भी होंगे और जो टिप भी हैं वो भी कंफर्टेबल जोन में होंगे। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग ने स्टेट से रिक्वेस्ट है कि ये सारे चीज़ प्लान कर लें। बेसिकली जो है इनका एक इंसेप्शन रिपोर्ट होगा, जब हम लोग टोटल वर्क प्लान करेंगे क्या इनपुट इसमें रिक्वायरमेंट है, क्या डेटा आएगा, क्या उसका पीरियोडिसिटी होगा मिड को। इसके बाद मिड सीजन एडवर्स रिपोर्ट है जिसमें कोई मिड सीजन अगर कोई करेक्शन करने की फैक्टर है, सेज अगर कोई इनपुट्स जो अदर चीज़ें जो उनको कलेक्ट करना था वो सारे फील्ड में अवेलेबल नहीं है या कोई और चीज़ें हैं उसके आधार से चेंज करेंगे। इंड सीजन रिपोर्ट ऑलरेडी इनमें दिया हुआ है, इनमें इसको इंड सीजन रिपोर्ट में जो इल्ड होंगे और उनके आधार पर ही क्लेम सेटलमेंट होगा। इसमें हम लोग ने आगे भी चेंज किए हैं कि हम कोई अगर अपील करना है या कोई किसी तरह का एरर करेक्शन है, अदर सारे चीज़ें इसमें इंड सीजन रिपोर्ट्स में इंश्योरेंस कंपनी और स्टेट गवर्नमेंट्स आप इसको चैलेंज कर सकते हैं और इसको आप फर्दर अपील में है। स्पेशल रिपोर्ट का प्रोविज़न है, हम लोग ने जैसे कल भी बहुत डिटेल में चर्चा कर रहे थे कि बहुत मिड सीजन एडवर्सिटी
एरिया बेस्ड जो खासकर प्रिवेंटेड सोइंग अदर चीज़ें हैं जो हम लोग गाइडलाइन में लिए हैं, और उसमें वेदर पैरामीटर्स अदर सारे जो प्रॉक्सी पैरामीटर्स है उसमें हम लोग डिफाइन किए हैं। बहुत सारे प्रॉक्सी पैरामीटर्स को डिफाइन करते हुए जो सारे चीज़ें आई वो कभी कभी चीज़ें और स्टेट्स के पास अवेलेबल नहीं हो पाते इमीडिएटली, तो हम लोग ने इसमें डाला है कि टिप्स जो है ये सारे जो स्पेशल रिपोर्ट है वो उसको अवेलेबल कराएंगे। तो ये सारे उसमें एक प्रोविज़न डाला हुआ है। इसमें इस फाइनेंशियल है, ये फाइनेंशियल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, वो सारे ऑलरेडी सारे लोग से डिस्कस्ड है। पेनाल्टी प्रोविज़न है और डिपेंडेंट का प्रोविजंस है। चूँकि ये क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस है और इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, तो ये सारे प्रोविज़न इन डाला हुए हैं। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, वो सारे डिस्प्यूट, क्योंकि कोई भी चीज़ें अगर रह गई है किसी तरह का चीज़ें है तो उसमें प्रॉपरली एक डेमोक्रेटिक वे में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेटलमेंट प्रोसेस अपनाने का प्रोविज़न है। इसके अलावा जो है हम लोग ये स्टेक के अलावा हम लोग विंड्स की बात कर रहे थे, जब वेदर डेटा अवेलेबिलिटी के नेटवर्क की बात है, जो हम लोग जो रियल टाइम में जो क्रॉप इंश्योरेंस पर्पसेस और एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए जो हमारी नीड है उसके आधार पर जो है हम लोग डेटा कलेक्ट करें। सॉरी ये लास्ट स्लाइड है शायद। इसमें हम लोग को मेजर चीज़ें ये देखनी है कि जो हमारे टिप्स का जो प्रिपेयर्डनेस है, क्योंकि ये इन लास्ट जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए इनकी प्रिपेयर्डनेस और स्टेट के साथ खास करके हमारे पास जो साइकिल चल रहे हैं टेंडर साइकिल, उसमें से बहुत कम समय बचा हुआ है। तो इसमें से बेसिकली हम प्रतीक मेहता जी से हम जानना चाहेंगे कि जो आपके यस टेक कमेटी का जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसमें आपका व्हाट आर द योर प्रिपेयर्डनेस टू वर्क एज ए टीप, है ना, इन मिनिमम टाइम जो आपके टाइमलाइन डिफाइन। I will not take much time. So I am Pratik Mehta. I am representing AMNEX. AMNEX is one of the empaneled agencies and हमने सेमी फिजिकल मॉडल से काम किया था फॉर सीरियल एज वेल एज नॉन सीरियल पे हम काम कर रहे हैं। सो बेसिकली आई वांट टू थैंक MNCFC मिनिस्ट्री एंड जितने भी एजेंसीज है जिसने पायलट स्टडी पे काम किया था, बिकॉज यू नो आफ्टर मैनी ईयर्स हम ये लेवल पे आए हैं। एंड जब हमारा SOP फाइनल हुआ तो उसके बाद काफ़ी वर्कशॉप्स हुए हैं टू एजुकेट द स्टेट्स एज वेल एज इंश्योरेंस कंपनीज क्या क्या मॉडल्स हैं एंड क्या क्राइटेरियाज उसमें यूज़ किया गया है। द SOPs आर शेपन अप नाइसली, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी क्लियर है। देर आर सम ऑफ द सजेशंस आई वांट टू गिव टू द स्टेट्स कि एक जो हमारा SOP में फ्रेमवर्क फाइनल हुआ है, वी हैव टू एंश्योर कि सारे स्टेट्स वो फ्रेमवर्क फॉलो करें, जिसमें आपका TIP, मित्र, टाइमली डिलीवरी, अगर कुछ पेनल्टीज़ हैं, सो दोज थिंग्स वी हैव टू एंश्योर। सेकेंडली स्टेट्स को मॉडल फाइनल करना पड़ेगा एंड इफ़ पॉसिबल अभी स्टेट्स हैव अ चॉइस टू गो फॉर 2 मॉडल्स एज वेल। उसका रीज़न एक है कि अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी एज अ टिप जाती है तो वो सिंपली आप नॉमिनेशन बेसिस पे वो कर सकते हो, बट अगर कोई प्राइवेट एजेंसी एज अ टिप जाएगी तो आपको टेंडर प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। सो द थिंग इज़, अगर वर्स्ट केस में ऐसा होता है कि एक सीज़न के बाद मे बी हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ और ऑप्शन हो, इन बिटवीन अ सीजन फ्लोटिंग अ टेंडर विल बी डिफिकल्ट। सो अगर ये स्टेज पे आप एक TIP एज अ गवर्नमेंट एजेंसी करो, एक TIP एज अ प्राइवेट अगर हो सकता है तो प्रॉबेबली आपका टेंडरिंग भी हो जाएगा, आपके पास रेट्स भी होगा एंड यू विल हैव अ ऑप्शन ऑफ 2 मॉडल्स, और जिसके बेस पे यू हैव अ प्रोविजन टू गो फॉर अ सिंगल मॉडल जहाँ पे भी जिसकी भी आपको एक्यूरेसी ठीक लगेगी। वैसे भी हम ब्लेंडेड अप्रोच की बात करते हैं तो प्रॉबेबली दिस विल गिव यू अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि समहाउ अगर हम 3 साल का ये जो टाइमलाइन फाइनल करते हैं वो 3 साल में इन बिटवीन टेंडर फ्लोटिंग आपका टाइम बहुत वेस्ट कर लेगा। सो दिस इज़ वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मुझे स्टेट से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा भी ना हो कि हम एक मॉडल फाइनल करें एंड हम कोई प्राइवेट एजेंसी को फाइनल करने का बोले और प्राइस डिस्कवरी के बाद वी डिसाइड टू गो अहेड विद द स्टेट TIP। उसका रीज़न ये है क्योंकि ऑलवेज प्राइवेट का और स्टेट का जो प्राइस कंपैरिजन है वो डिफरेंट रहेगा। एज अ प्राइवेट एजेंसी आपको वो स्टेट में ऑफिस सेटअप करना पड़ेगा, GTs करना पड़ेगा, CCs करना पड़ेगा, उसकी प्राइसेस डेफिनेटली डिफरेंट होगी। अगर यही चीज़ अगर गवर्नमेंट एजेंसी करेगी तो शायद उनका ऑफिस सेटअप
नहीं होगा, शायद GTs एंड CCs की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होगी. सो द थिंग इज़ ये पॉइंट आप कंसीडर करके आप मॉडल फाइनल कीजिए एंड स्टेट्स शुड बी वेरी मच क्लियर कि मुझे ये मॉडल पे आइदर आई वांट टू गो विद द गवर्नमेंट एजेंसी और आई वांट टू गो विद द प्राइवेट एजेंसी. Then the insurance companies are also going to play an important role because हम अभी बात कर रहे हैं कि मित्र, TIP, states, but at the end हम इसका 30% weightage दे रहे हैं. तो for the insurance companies also, they also have to understand कि ये मॉडल कैसे वर्क करेगा, क्या क्या पैरामीटर्स है, कैसे रिजल्ट्स जनरेट हुए हैं एंड ये मेरे को फ्यूचर में कैसे इम्पैक्ट करने वाला है. बिकॉज एज ऑफ नाउ वी आर सेइंग 30%. हम 3 साल के बाद ये वेटेज बढ़ा के शायद 40 से 50% करने का प्लान कर रहे हैं, राइट. अगर हम कॉस्ट की बात करें, शायद स्टेट्स के पास जो कॉस्ट बचेगी इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, राइट, उसके सामने जो TIP जो कोट करेगा वो शायद नलीफाई हो जाएगा. ऑफ कोर्स आई विल हैव अ सजेशन कि एक बार जो TIP के लिए जो कॉस्ट है वो भी एक बार रीलुक करे, बिकॉज पर्सनली आई फील वो शायद 20 to 30% डाउन है पर डिस्ट्रिक्ट. देन द टाइमलाइन, हम काफ़ी बात कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट रिपोर्ट शायद मिड सितंबर में होगा एंड वी नो वेरी वेल कि हमारा प्रिवेंटेड सोइंग एक स्पेशल रिपोर्ट भी है एंड वी नो कि उसका एक टाइमलाइन फिक्स है. तो वो कंसीडर करके स्टेट्स शुड डिफाइन द टाइमलाइन और उसके अकॉर्डिंग टेंडर फ्लोट हो तो टाइमली रिपोर्ट जनरेशन होगा. एक सजेशन दूसरा ये था कि हमने ये भी बोला हुआ है कि 2017 ऑनवर्ड आपको डेटा जनरेट करना होगा, बट माय रिक्वेस्ट इज अगर उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा. उसका रीज़न ये है कि इमीडिएटली विद द नेक्स्ट सीजन जब एक TIP ऑनबोर्ड होगा, मित्र ऑनबोर्ड होगा और वेरी फर्स्ट सीजन में काफ़ी सारा वर्कलोड होगा. अगर हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीजन वो 2017 ऑनवर्ड डेटा जनरेट करने का ना रखे और इन बिटवीन सीजन रखे और विद इन 1 ईयर रखे तो दैट वुड गिव सम टाइम टू TIP एज वेल एज मित्र, वो बर्डन उतना नहीं रहेगा. एंड कल हमने जैसे बात किया कि इसमें बहुत ज़रूरी है कुछ स्टेट को एज अ मॉडल स्टेट आगे आए, जो कोई मॉडल से इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी मॉडल जो भी मॉडल सजेस्ट किए हैं, वी वांट कि मैक्सिमम सक्सेस रेट इसमें हो. एंड एज अ प्राइवेट एजेंसी माई रिक्वेस्ट इज हमें भी आप फेयर चांसेस दीजिए टू परफॉर्म एंड टू कम्पीट. एट द एंड हम नेशनल इंटरेस्ट में एक अच्छा रिजल्ट देने का प्लान कर रहे हैं. दैट्स इट फ्रॉम माई एंड. थैंक यू. ओके, थैंक यू प्रतीक जी. शरद कोठारी जी से मैं जानना चाहूँगा, खास करके डिफरेंट मॉडल्स जो स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसमें बहुत सारे डिफरेंट इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसकी टाइमलाइन होगी, बहुत सारे चीज़ें. तो आप व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्टेट्स एंड मित्र टू एक्सिक्यूट द वर्क? Hi, good morning. I am Sharad Kothari. I am representing Cropping Technologies here. Thank you very much MNCFC. Thank you very much Ministry of Agriculture. Thank you Ritesh sir. Under your able leadership we are able to see and come to this stage right now where we are trying to completely digitize the claim process settlement, the settlement process. As far as the stage or state of preparedness is concerned, all the TIPs have been working with MNCFC for past 3-4 years now, covering varied districts, variety of climatic zones, the crops, targeted crops. So as far as the technological preparedness is concerned, I think all the agencies are fully prepared to get on the ground right from the beginning. So I have from the support which is required from the state is more towards the historical data, towards the permission required to conduct the field survey. There are a couple of permissions that are required to conduct drone surveys as well. So this is one of the most critical factor which will decide the success of the program on the ground. And I have one more suggestion, and that is more towards MNCFC. That we are getting into a multiple mode of bidding process. We are doing bidding or AOI for empanelment first, then the same will happen with the state as well, and then we will also get into a financial bidding process. So instead of that, if we can have a single process, because the crops are identified, the districts are identified, the states are identified,
technology is identified, rate is almost is identified. So if we can have one single process of bidding, we can have a little more brainstorming on that. And it will help. It will help in reducing time. It will help in cutting the administrative efforts. And second, as my fellow colleague Pratik highlighted, the timelines. The timelines in the September mid and Feb mid, we have to submit the midterm review reports for Kharif and Rabi. And we are already here in April. We have not even started the process of coming on board. It will be a bit challenging for the TIPs to submit the report by mid of September, because a lot of efforts are required to create a midterm report. So at that help we will request that if the process can be speeded up, and a clarity should be given to TIPs about the rollout framework, so that we can we can mobilize the required administrative requirements on the ground. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू, क्योंकि जैसा पहले भी हम लोग बता चुके थे कि एक टाइमलाइन हम लोग ने रखा था ध्यान में रखते हुए कि हमारा क्लेम सेटलमेंट्स का टाइमलाइन जो ऑलरेडी डिफाइंड है, उसके बीच में हमें जो वर्क प्लान है, अदर सारे चीज़ें हैं, एडजस्ट करना होगा. तो अकॉर्डिंगली हम स्पेसिफिकली फिर से एक बार मैप कर लेंगे कि क्या हमें ज़रूरत है और किस तरह का क्या इनपुट होगा और किस टाइम में अवेलेबिलिटी होगी इस इनपुट्स की, और स्टेट से क्या हेल्प होगा. इसमें हम लोग ने टीआईपी में गवर्नमेंट और प्राइवेट्स दोनों ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ने इनलिस्ट किया हुआ है. बेस्ड ऑन द जो पीछे वर्क किए थे, इसमें इक्री साइट्स जो हैं, खास करके जो इंटरनेशनल और नेशनल एक्सपीरियंस हैं, लेकिन बीइंग ए गवर्नमेंट एजेंसीज, उनको हम टिप्स के लिए वर्क असाइंड अगर करेंगे तो वो एज ए टिप्स क्या उनको जो वर्क असाइंड होगी उसमें रियलाइज़ करने के लिए क्या उनकी क्या सोच है, किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहेंगे, और क्या उनको कोई स्टेट से अदर एक्सपेक्टेशन है या क्या है, इस तरह से, ताकि वो स्टेट्स जब डिसाइड करें कि हमें गवर्नमेंट एजेंसीज लेने या प्राइवेट एजेंसीज, तो उनको बहुत सारा क्लियर होना चाहिए कि किस एक्टिविटीज़ को कैसे करना है. Thank you. Good morning. Myself Pranay. I am representing ICRISAT. As you all know, ICRISAT recently celebrated its 50th anniversary, and we have a strong presence in Africa as well as South Asia. And we are doing our agriculture interventions in majority of the state like Odisha and Bundelkhand regions. And coming to the context, like we have adopted crop simulation model, and we also have experience in like dealing semi-physical approaches also. Talking with crop simulation model, like which result huge input parameters, and the accurate parameters leads to the accurate results. Where I would like to ask the state governments, like to provide us like accurate village boundaries. Like when we receive that shape files, when we take that shape files and when we visit the ground scenario is different. So we need to standardize that first. And coming to the weather data, there is very coarse weather data we have. These may not work well with simulation models. These winds will, I think, these fulfill these things. And coming to the crop management practice, I would like to ask the state governments to create some database like how the management practices are there in the different areas. And coming to the soil data, there is very coarse resolution soil data. As the process-based approach we are approaching, like we are taking the process-based approach, there should be some accurate data. Coming to the SOP, like as colleagues, they already discussed about this. Like, thank you from this. ओके, थैंक यू डॉक्टर प्रणय. खास करके इसमें हम लोग ने स्पेशल रिपोर्ट की प्रोविज़न रखा और मिड कोर्स करेक्शन की प्रोविज़न है, जिसमें फील्ड लेवल स्टाफ्स और अदर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और हम उसको
किस तरह से प्लान कर रहे हैं? ये एक्चुअली एक टिप्स के लिए बहुत मेजर चैलेंजेस होंगे। हमारे साथ ये महेश कुमार बंजारे जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट एग्रोटेक। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर मिड सीजन में करेक्शंस और जो स्पेशल रिपोर्ट्स वगैरह की जो रिक्वायरमेंट होगी, और वो किस तरह से उन मैन पावर मैनेजमेंट करके हमारी जो टाइमलाइन है उसमें किस तरह से करेंगे, क्या प्लान है उनका? Thank you, Sunil sir. I am Mahesh Kumar Banjare, representing to Agrotech Risk Private Limited. First, I would like to say thanks to Ministry of Agriculture and Farmer Welfare to provide a great opportunity to connect with the states and all the other agencies like Mitra, Tips at a single platform, insurance and reinsurance company as well, to know the concerns and the way forward. So now I am coming on the today's discussion point. We Agrotech as a technological implementation partner, so we assure to all the states and obviously Ministry of Agriculture and Farmer Welfare as well, to we are fully ready to complete our analysis within the stipulated time and to complete these full-fledged technology-based solutions. So we have developed already class sophisticated software platform as well to control the big database, as Sunil sir suggested how to manage the big database, because it's a large scale project. So since 2019 we had already participated in the pilot projects, small pilot project and big pilot project, but now it's a chance to execute to large scale projects. So I would like to say here, we for the management point of view to use database. So as we had already demonstrated our class cloud software application in the Hyderabad managed place, hands-on experiment and demonstration already done in the managed platform. So our platform is ready to process the data for the country level, not for the district and the state. So we are capable to run the analysis and manage the big database pan-India level. So class is a crop loss assessment support system. So class is developed in-house in the Agrotech and available for big database analysis. And class is equipped with various technology like a remote sensing technology, navigation technology, modeling technology, and IoT's technology, and mass data storage technology. So using the mass news data, mass media technology, so our user or modeler can see the last moment calamity or any unseasonal activity and train our model based on the last moment changes. So software platform is ready to manage the big database, and most important thing in the class system is that class is capable to run the most of the process in the automated mode. So we have developed for large scale project as per the current requirement for the scalability point of view. So software is capable to download and run the pre-process and the post-process and the indices as well automatically. And I can say that if any satellite acquire the satellite imagery and store in the open public database, it's available in the class system and automatically run all the processes internally, and data is ready for modeling purpose. So our software is continuously working 24/7 mode, and major challenge is for technologies to collect the database and process the database, big database. So most of the process automated. We can say that 90 to 95% processes are automated. And Agrotech's ensembling technique already recognized and validated by Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. In the ensembling, actually in the ensembling, ensemble create a various model and compile the various result and predict the high level of accuracy value for the yield prediction.
And ensembling, always we can say that ensembling stay on the top for all the modern modeling technology. In the ensembling process, we are using, and we already use for the big and large pilot project. We already generate their database using around 8 ML processes and simulation processes, crop factor modeling, semi-physical modeling. Already we done in our class platform. After entire database and entire modeling process, ensembling will just compile the results from all the model data and predict the higher accurate value. And all the details already available in the STEC manual related to ensembling technique. And ensembling, we are using the 3-stage ensembling to predict the higher level accuracy. So Sunil sir, we assure to all the states and other agencies as well, we are very much capable to do our analysis within the stipulated timeline. But we request to state as well, because to run the process and to start the project, we need support from state as well, like a boundary data, IU level boundary data, so that we will freeze the scope of work immediately. And as you already mentioned, we need to work on the premature showing as well. So just provide the go-ahead to start the work, so that we can freeze the area of study and start our work in the to deliver our entire modeling activity and result in the on time. So we need support, basic support actually for the boundary database. And second one is for the more accuracy, we requesting to states as well to provide the historical data as well, so that we will implement the model, fine-tune the model to generate the more accurate results. So, and in the second stage, at the time of crop cutting experiment, we requesting to state to provide the support to conduct our ground operation in a smooth manner. So that's from our side. And for the technological point of view, I would like to say we are fully ready. Our software is fully ready, class software is ready, our ensembling technology is already, modeling technology already validated, recognized from the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. So we are ready on all the points and all the challenges, to accept all the challenges. Even it's not a challenge for us to start the analysis for a few of the district or few of the states. So we can say that we are ready to complete our analysis for pan-India level because of the help of our advanced technology. So that's all from my side. Thank you, Mahesh ji. आप एश्योरेंस हमें काफ़ी दिए हैं और होप सो जो हमारे रिक्वायरमेंट जो फील्ड लेवल की होगी मिड टर्म और अदर चीज़ों के जो एक्चुअल फील्ड वैलिडेशन और अदर रिक्वायरमेंट के लिए हो, होप सो आप लोग प्रिपेयर्ड होंगे और उस तरह की प्रोविजनिंग्स ऑलरेडी आप लोग करेंगे। इसके अलावा विंड्स के अलावा एस्टेक के अलावा हम लोग इसका विंड्स का रोल आउट का भी प्लान किया हुआ है। खास करके हमारे बहुत सारे टेंडर साइकिल्स इस बार जो है RWBCIS के ऑलरेडी फ्लोट हो रहे हैं और फ्लोट हो जाएंगे कुछ दिनों में। 3 साल का टेंडर साइकिल है। मीनवाइल हम लोग जो है ट्रांजिशन फेज में अभी हैं और हम जल्दी से जल्दी हम लोग चाहेंगे कि विंड्स का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोमिस कर रहे हैं या चीज़ें हैं जो गैप है उसको फिल करें। फर्स्ट हम लोग विंड्स में प्लान है कि जो हमारी IMD का डेटा है उनको यूज़ करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के डाटा है प्लस स्टेट जो ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अलावा जो गैप्स है उनको डेटा प्रोक्योरमेंट की प्लान है जो हम प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू लेंगे। उसमें जो है हमें लोकेट करना होगा, बहुत सारे चीज़ों को टेंडर के थ्रू हम लोग डिसाइड करेंगे। तो क्या जो मिनिमम जो प्लान है इसमें क्या चीज़ें हो सकती है, मैं योगेश जी से जो CEO स्काईमेट से हैं उनकी आपने क्या टाइमलाइन और स्ट्रेटजी क्या आपकी होगी जो मिनिमम से मिनिमम टाइम में हम विंड्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ डिजायरेबल है वहाँ हम इस्टेब्लिश कर पाएँ
ताकि हम एश्योर कर पाएँ कि हमारा जो डेटा है वो इंटरवल पर हमारे जो डिजायर्ड लेवल पर डेटा है, डिजायर फ्रिक्वेंसी और सारे जो इंस्ट्रूमेंटल वगैरह की जो हम लोग ने विंड्स गाइडलाइन में सारा चीज़ डाला है उसको इंश्योर करते हुए कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा जो हम एक स्ट्रेटेजिकली प्लान कर पाए, आप बता पाएंगे योगेश जी? गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। सर मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि 2003-4 almost 2 decades back when this country has started using weather stations on the large scale where the introduction of all private parties has started, a trigger came for insurance. The weather index based insurance came, and the same logic where the IMD's weather stations were limited. To fulfill the gap, the insurance company approached companies like us, private parties, like you fill this gap, put the station. That was not structured approach. There was no guideline where to put, how the data get transmitted and all, but something has started. So it has catalyzed by the state of Rajasthan where they declared entire state under the index-based insurance. And then slowly the usability of these data sets has started percolating in the other sectors other than the agriculture. Now again, after almost 2 decades, again we reached to the same stage, and we are very happy to see that again the next revolution, like you can say, it's a massive rollout. I have never seen such a rollout across the world, which is again triggered by the insurance only. This is first. Second, sir, if you ask about our preparedness on this, I think everybody is preparing since last 2 decades. We are just waiting for this day. So we are fully prepared. On the dependency, 90 to 95% equipments are basically manufactured in India only. Very small electronic component we are dependent on the import part, where I think the time period of almost around 3 to 6 months will be required considering the volume. Otherwise everything is built in India only. On there are a couple of points only, sir, on the data side. So our sincere request from our side will be, don't limit this data for agriculture. It has to be linked with the disaster. This is number one. Then only it will be, the uses of this data will be maximum. Second, there are a lot of other data providers or the states where they have, apart from this basic sensor, other sensors are also there. Like we, from SkyMed, we have a very critical data set which is called lightning, okay, across the country. We are very happy to share that data sets also wherever we get a chance to implement. And don't limit the other providers. If they have like soil moisture, soil temperature, okay, then it has to be integrated into the national winds portal. It should not have a minimum these 3-4 parameters. All the data sets should come. And then once you create this national repository, okay, please ensure that these data get integrated with the IMD. Okay, so the moment it gets integrated, obviously their forecast at the very hyper-local will get improved, and very happy to support on that part. And sir, last point, okay, on the implementation perspective, obviously the payments are not clear into this, and considering this has capex and opex requirement, the 3-year period, okay, for the data subscription also will not be a logical way. We want that if any tender floated by the state government should be like 5 to 7 year minimum, so that the burden on the charges will not be there. थैंक यू योगेश जी, आपने डिटेल में बताया, लेकिन साइटिंग जिसका AWS साइटिंग, कैलिब्रेशंस और सारे चीज़ों के अलावा जो रिलोकेट करने के अलावा भी हमारे लिए मेजर चैलेंज है कि डाटा नेटवर्क, जो डाटा जो हम ट्रांसफ़र करेंगे वो डेटा नेटवर्क किस तरह से होना चाहिए और क्या हमारी उसके लिए मैकेनिज़्म होनी चाहिए उसको बिल्ड करने के लिए। डॉक्टर ये अंबुज जी हैं हमारे साथ, CEO इंजन टेक्नोलॉजी के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ किस तरह की एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री को और किस तरह का डाटा हमारे लिए होगा कि लॉन्ग टर्म हम मिनिमम समय में जो हमारी क्वालिटी को भी मेंटेन कर पाए, मॉनिटरिंग प्रॉपर हो पाए और रियल टाइम में जो डेटा है वो हम स्टेक्स होल्डर को जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर हम दे पाए। किस तरह की आप लोग जो ऑनलाइन डेटा या जो इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर की चीज़ें की रिक्वायरमेंट है और क्या उसको बनाने में इंडस्ट्री में क्या हमें हेल्प कर देंगे और कितना टाइम मिनिमम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हम लोग बैठे इंडस्ट्री के साथ तो क्या हमें कितना टाइम लगेगा? Sure. Thanks a lot. Thanks for this opportunity, and we are happy to be part of WINS, and we are also part of YesTech in WRMS.
टाइम के पर्सपेक्टिव से हमारा ये मानना है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट लार्ज डेटा सेट्स एंड बिग डेटा, तो इसको नो एसक्यूएल डेटाबेस पे क्लाउड टेक्नोलॉजी में रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये डेटा बढ़ता ही जाएगा, ये कभी कम नहीं होगा, ये एक्सपेंड होता रहेगा, और आपका डेटाबेस इतना ओपन आर्किटेक्चर का होना चाहिए कि वो एक्सपेंड होता रहे डेटा के साथ, और इसमें और डेटा पूल्स भी आ सकें या किसी और डेटा को प्लग इन किया जा सके, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी, आप यील्ड डेटा भी उसमें डाल रहे हैं, वेदर डेटा भी डाल रहे हैं, और कहीं जाके यस्टेक डेटा भी उसमें आएगा। तो उस टेक्नोलॉजी को मतलब जो टेक्नोलॉजी जो वर्क करनी चाहिए वो बिग डेटा फ्रेमवर्क में वर्क करनी चाहिए। उसमें हडूप है, कसांड्रा है, बहुत सारे ऐसे क्लस्टर टेक्नोलॉजीज़ हैं जहाँ पे आप नो एसक्यूएल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो जो एवर एक्सपैंडिंग है और बढ़ता जाता है। तो यही टेक्नोलॉजी हम अभी यूज़ कर रहे हैं, और इसीलिए ये इंटीग्रेशन हमारे लिए इजी हैं, हम नंबर्स बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशन स्पीड, जो मेरा सेंस है कि मोस्ट ऑफ द डेटा प्रोवाइडर्स जो PMFBY में पहले से काम कर रहे हैं वो 50 से 60 हज़ार स्टेशन एक साल में लगा सकते हैं, तो शायद ये नंबर अचीव हो सकता है ईजीली अगर हम ऑब्वियसली स्टेट्स और ये सब पहल करें। कुछ इश्यूज जो योगेश ने ऑलरेडी हाईलाइट किए हैं, वन ऑफ द थिंग्स ऑब्वियसली इज़ द पेमेंट क्लैरिटी, किससे आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली शेयर हमें दिख गया, बट हु इज़ गोइंग टू पे, लेट्स से स्टेट शेयर, हाउ इज़ इट गोइंग टू कम, व्हेन इज़ इट गोइंग टू कम, गिवन दैट दिस बिजनेस अनलाइक यस्टेक विंड्स में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत हाई है और उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट हैवी है, और उसका एमोटाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करना है। तो वो 3 साल की जगह, जैसा कि हम काफ़ी स्टेट से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि सिंस PMFBY इज गोइंग टू कंटिन्यू, इफ देयर इज अ क्लॉज एटलीस्ट इफ नॉट एनीथिंग एल्स, कि 3 साल के बाद उसको एक्सटेंड कैसे किया जाएगा विद द सेम सर्विस प्रोवाइडर्स हु आर, बिकॉज वी आर पुटिंग इन असेट्स इन दिस केस। देयर इज वन मोर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, डेटा जो पूल में आएगा वो यस्टेक की टिप्स के साथ भी शेयर होगा। ये गाइडलाइंस में एक क्लैरिटी और होनी चाहिए, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट रेंटल मॉडल वेयर डेटा ओनरशिप इज गोइंग टू बी विद विंड्स सर्विस प्रोवाइडर। तो क्या ये डेटा जो यस्टेक कंपनीज या टिप्स के साथ शेयर होगा, उसका जो शेयरिंग मैकेनिज्म है या एग्रीमेंट है, बिकॉज दिस डेटा should only be used for yield estimation for PMFBY by these private agencies. This should be clarified, and this should be part of the agreement which is done between yestek companies, and that this data cannot be used for any other purpose by them for anything else, including internal modeling or anything else. So some of these things. One of the points which I wanted to highlight on winds is as both the CEOs of PMFBY, erstwhile and current, have mentioned that we are moving towards a technology platform to make PMFBY more sustainable. I think it's a good idea to also give a roadmap of how the number of CCs will be reduced over the years. Interestingly, one of the key problems states are facing is overwhelming number of CCs. जितना उनको number of crop cutting experiments करने पड़ते हैं, वो infrastructure और वो cost. While we are talking about use of technology, I think CC के नंबर अगले 5 साल में कैसे कम किए जाएं, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि हम उसको कैसे लेकर आएँ. So these are some of the things which we would want to say from our side. Thank you. थैंक यू अनुज जी डिटेल में बताने के लिए, लेकिन जो हमारा मेजर कंसर्न था कि सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर चीज़ों में, क्योंकि आपके इंडिविजुअल्स हैं, ये गवर्नमेंट लेवल पर एक नेटवर्क क्रिएट करना है, और नेटवर्क क्रिएट करने में चूँकि अलग अलग एजेंसीज़ का अलग अलग हो सकता है सॉफ्टवेयर और अदर सारे चीज़ों को है, क्योंकि नेशनल नेटवर्क पर आना है, तो उसके लिए हम लोग ने ये चीज़ किए थे. फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको हम किस तरह से कर सकते हैं चीज़ों को. मेजर चैलेंज हम लोग का एक आप लोग देखते हैं कि डेटा टेम्परिंग का एक बहुत इशूज़ है, चूँकि इसमें क्रॉप इंश्योरेंस में फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है डेटा पर. उसके लिए डेटा टेम्परिंग्स होते रहते हैं, बहुत सारे हमारे पास चीज़ें आए हैं, बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी होने के कारण डेटा भी मिसिंग होता है. ये सारे चीज़ें, क्योंकि हमारे ये इस डेटा का यूज़ जो हम क्लियरिफाई कर देना चाहते हैं
कि नॉट ओनली फॉर द वेदर इंश्योरेंस स्कीम, इसके एस्टेक्स प्लस अदर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हमारे होंगे, जो हमारे साथ काम करेंगे, जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए काम करेंगे, उनके साथ हम ये डेटा शेयर करेंगे पूरा। तो ये पर्पस टोटल हमारे पास टोटल हमारी जो गवर्नमेंट की नीड है एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क के लिए, तो उसके लिए हम लोग ये वर्क स्कोप ऑफ वर्क में ये डेटा प्लान में डाला हुआ है। हम लोग साथ जुड़े हुए हैं ये राजेंद्र रेड्डी जी, खास करके मैं उनसे ये चीज़ें कि किस तरह से प्लान करते हैं कि डाटा जो डेटा मिसिंग होती है, टेम्परिंग होता है इंस्ट्रूमेंट में, और जो सारे चीज़ सेंसर और इंस्ट्रूमेंट्स की जो एक साइटिंग जो रखा है, कैलिब्रेशन टाइम्स रखा, उसको किस तरह से मेंटेन करना चाहिए और उसमें किस तरह से आप लोग यूज़ करते हैं, और जो टाइमलाइन हम लोग ने डाला है वो टाइमलाइन के अनुसार पूरी वर्क प्लान इंडस्ट्री में है या उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कंप्रोमाइज़ किया हुआ है सारा चीज़ों की, जो मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट है उस गाइडलाइन में हमने डाला एग्रीकल्चर अदर पर्पसेस के लिए। तो क्या ये होना चाहिए और क्या इसमें आपका सजेशंस? Thank you, sir. Thank you for giving the opportunity. I'm Rajendra Reddy representing NCML. As we are the pioneers, we have been providing weather data services since more than a decade. So, as you said, sir, ये already योगेश सर ने और अनुज जी ने already जो points है cover किया है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बेसिकली ये जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो है मिनिमम तो 6 months का टाइम, 4 to 6 months का टाइम तो लगेगा हमें for establishing the large network, and for this troubleshooting हो, maintenance हो, ये और calibration का है, जो SOP दिया है that is very detailed, that we are already been followed, उसमें सारे चीज़ सारे points it has been covered, and इसमें कुछ एक छोटी सी ये है rain gauge, that rain gauge which we have been established in large scale around 2 lakhs that is proposed, उसमें एक जो SOP में डाला गया कि उसमें एक 10% ARGs में टेम्परेचर सेंसर ऐड किया गया है। तो वाई ओनली उसमें एक और हम लोग सजेशन है सर, एक उसमें एक और ऐड कर सकते हैं कि हम लोग बिकॉज रेन गेज में क्या है, आपको डिस्कनेक्ट हुआ तो को जो भी है वो पता नहीं चलता, तो उसमें हम लोग ये भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं टेक्निकली, दैट इफ़ एनी केबल इज़ डिस्कनेक्टेड और कट, केबल इज़ कट, तो वो भी एक टेक्निकल पॉइंट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। दैट rest all the points has been covered and we are ready and we are prepared in establishing the network. Okay, thank you और राजेंद्र रेड्डी जी। चूँकि ये डेटा के साथ साथ इस डेटा को कंटिन्यूसली क्वालिटी कंट्रोल और सारे चीज़ों को थर्ड पार्टी ऑडिट का प्रोविजंस ऑलरेडी विंड में हम लोग डाले हैं, और इसके लिए हम लोग जो है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया असाइन किया हुआ है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन डॉक्टर हरि प्रकाश जी, डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया। चूँकि उनका एक मेजर रोल होगा टोटल चीज़ों को एक ऑडिट करने का, एक कॉन्फिडेंस स्टेक होल्डर के बीच में इंश्योर करने का। तो आपकी इसमें क्या एक्सपेक्टेशन, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि साइटिंग में बहुत सारे चीज़ें होंगे कि अगर न्यू प्लान है तो सारा इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह डिटेल जो होंगे वो सारे प्रोक्योर किए होंगे, कैलिब्रेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मेजर चीज़ें हमें इंश्योर करना है साइटिंग जो हमारे जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, और ख़ास करके जहाँ टेंडर में अगर कहीं वर्क प्लान में उनको नहीं मिल पाया तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को रीलोकेट करेंगे। तो इसके लिए क्या किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं इंडस्ट्री से, और क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? डॉक्टर प्रकाश जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, I hope I am audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So, first of all, thank you very much for all the organizations and giving us this opportunity. Here, I would like to say is that my name is Dr. Hari Prakash, and this is the name of the organization, Quality Council of India. We are a agency under Ministry of Commerce and Industry, and we are working in all areas of the quality assessments or the quality interventions where there is required. So, in past, to give you confidence to everyone is that we have had a good number of the meetings with all the good number of the stakeholders. We are very frequently visiting Dr. Murthy and his team. We have visited to understand the requirements to the insurance companies. To take the knowledge, we have visited like Mr. Yogesh and Mr. Arun also personally, and we have discussed all this.
Here the idea is that very transparent way of working of the third party agency is that we don't make the guidelines, but we follow all the guidelines. So whatever the guidelines has been prepared by Dr. Murthy's committee, so these will be taken, and on the basis of that, everything will be checked accordingly. How our implementation agencies, they are following it. The best part of doing that is that there is what are the SOPs on the basis of the recommendations of a committee. So how the individual company is now making or the organization is making their SOPs. We want to check that SOPs, and we understand that to make it the life easy for the implementation agencies as well as the monitoring agencies, we want to emphasize on that is how they are following their quality assurance internally. So whatever the equipment they are buying, whatever type of the human resource they are putting on this job, so we want to see everything is how these organizations are putting efforts for quality assurance, because this is the best way of working is that first time they do the work right. So this is the idea. We'll make all the requirements that we'll check it accordingly. Being third party, this is the best part is we are the neutral. We believe in can say total transparency. We'll take the good sample about it, is how to go about it, how many the online data will take it. On the basis of the online data, we'll try to find out is what size of the sample should be there to say that the work which is going on in each and every corner of the country can be verified, how the data is coming to us, what can be the pain points, and what can be the stringent assessments we have to do. We'll decide on the basis of that only. But if the quality of the instrument is reliable at the first time, if the calibration period is long, you can say large or the longer, so it will be easy for the implementation agency as well as for the Quality Council of India. So believe that is all the information, whatever they are having or whatever the activity they are doing, they should be the master about it, and we will follow all the precautions, how to do the assessment with the help of the by having all the information that when we are coming, what we are doing, how to do that. Other than that, a sample which we draw, and when the team visits on the site after doing all the risk assessment, and some of the areas we do visit surprising, we do the surprise visits also. So that gives a confidence. And when our team is doing assessment, even the Quality Council of India is having a policy of doing the assessment of our own team also. So that is by chance, if anything is being overlooked any time, either by the implementation agency or the monitoring agency, it can come to the notice. And we do take all the information from primary sources, or we do take all the information from the secondary sources. If there is any case of the theft is happening, it means our system is not working, maybe any data is not coming. But to say we will do all these areas very quickly and very efficiently as can say this work is being assigned to us, or the system is mature, and we have prepared ourselves. We have visited good locations, where the monitoring system is going on, where the plan is going on, and we are taking all the stakeholders, we are discussing with them, and we are equipped about it. We can do it at a short notice. There are some points which you have to discuss internally with the Dr. Murthy and his team, or with the Ritesh sir. So we'll finalize it and we'll start working as quickly as possible. So maybe the part of having give the inputs as the draft document. So we have gone through it. We will say the right concept, few lines about it if there is on the draft guidelines, and we'll be doing it as per the guidelines itself. Only the good points I would like to mention here is because as being a third party, our aim of doing all the assessment is on the consent basis. We understand that our aim is not to find out any fault, but we'll do find out all the facts. So to say anything, the system is working, we require a document. If you want to say system is not working, still we want a document. So our approach will be totally document based, evidence based, and most of the time all these agencies, they agree with it. We work with the consent of each other. Is yes, the agency agrees about it. Yes, this data is not coming truly, or this data is not available, or if this data is having some issues into it, so we consented, and then only that we provide a report every time. In that so all these are about our side only. To mention another on this platform is
wherever we work with all the full confidentiality, total impartiality, because we are being the neutral one, and we avoid any conflict of interest, because as being a national body representing India in the international agencies, so we avoid every conflict of interest. We don't participate in any objective based which is that. And we understand there will be a challenge to us, because different agencies are there, different equipments are there, different equipment manufacturer will provide these equipment, and the data has to come, but we'll try to harmonize everything so that the same data can come and combine on one portal, and it can be used for the need of the nation. And we have, as I told you, we have prepared ourselves. We'll wait for any of the next inspections we get, and we can start working as early as possible from our side. And as I mentioned, we are in touch with the Dr. Murthy's team or Phil's team. So we are confident about it. We can start working as early as possible. Okay. If any more point from my side, so we'll be happy to respond it. Okay. Thank you, Dr. Hari Prakash ji, for giving assurance. खास करके पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है कि जो भी पॉइंट्स डिस्कशन में रह गए हैं वो हम लोग जल्द से जल्द अवेलेबल करा दें, ताकि हम उन लोग एग्जामिन करके इसको कर लें। ऑडियंस से कोई स्टेट गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी और किन्हीं का अगर कोई पार्टिकुलर क्वेश्चंस हो जो आप टिप्स से पूछना चाहते हो। मेरा कुछ क्वेश्चन है एनी ऑफ द विंड्स कमेटी में एजेंसी में आंसर कि इन केस आप जो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डेटा एज ए सर्विस चाहिए, ठीक है, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजेंसी, राइट। तो अगर कोई डेटा से पर डेटा टेम्परिंग या कुछ सेंसर रिलेटेड इश्यू या मिसिंग डेटा इन केस अगर ज़्यादा टाइम तक, सो व्हाट इज योर प्लान, अल्टरनेट प्लान क्या होगा फॉर दैट? वन ऑफ द वेज ऑफ मिसिंग जो जनरली एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में भी हमारा होता है 72 आवर्स में हमें स्टेशन को वापस इंश्योर करना होता है कि वो चल रहा है। दिस इज़ अ गाइडलाइन। उसके बाद पेनल्टीज़ लगती हैं जहाँ पे भी हम एज अ सप्लाई इंस्टॉलेशन कमीशनिंग और मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो उस तरह की गाइडलाइंस में भी प्रोविजंस होने चाहिए। उसके अलावा वो जो 72 आवर्स का जो डेटा नहीं होगा उसकी जो फिलिंग है उसमें WMO की स्टैंडर्ड मेथडोलॉजीज़ हैं, उसको यूज़ करना चाहिए डेटा फिलिंग के लिए, और उसके एल्गोरिदम्स जो हैं वो सिस्टम में ही डाले जा सकते हैं कि वो डेटा फ्लैग होके फिल हो जाएगा। तो देयर हैज़ टू बी अ डेटा एरर चेकिंग मैकेनिज्म जो एल्गोरिदम्स में होता है, जिससे आइडेंटिफाई होता है कि शायद ये डेटा गलत है, और उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिव्यू करके अगर वो डेटा रिमूव होता है उसकी जगह कौन सा डेटा आना चाहिए उसकी WMO की गाइडलाइंस है, जिससे और विद दैट काइंड ऑफ इंटेंस नेटवर्क उस नेटवर्क में जो नियर बाय वेदर स्टेशंस हैं जैसे प्रेसिपिटेशन में या टेम्परेचर के अंदर हैं उनको यूज़ करके आप डेटा फिल कर सकते हैं, और उसके भी एल्गोरिदम्स बनते हैं होते हैं। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन इज फॉर द TIP। आई थिंक फ्रॉम द डिस्कशंस ये पता चल रहा था कि कुछ TIPs जो इंटेंडिंग कर रहे, जिनका जो भी मॉडल चल रहा था, इनका एक प्रेफरेंशियल मॉडल है, बट एज फार एज SOP इज कंसर्न जिसमें वो 5 मॉडल बताया गया है उसमें एक्यूरेसी लेवल के बारे में ऑल आर इक्वली ओके। नाउ ऐसा एक इम्प्रेशन बनता है कि कोई भी TIP होगा तो वो अपना मॉडल चलाने की कोशिश करेगा। अब इंश्योरेंस कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग मॉडल चल सकते हैं, TIPs विल ऑल्सो बी डिफरेंट। दिस ऑल्सो इक्वली अप्लाइज टू द MITR। अगर मित्र का एक प्रिफरेंशियल मॉडल है और दे वांट टू एनफोर्स दैट मॉडल इन अ पर्टिकुलर स्टेट एंड द TIP एग्रीज, देन देयर इज नो इशू। बट इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि एक TIP एक जगह पे अपना मॉडल चला रहा है, दूसरी जगह पे वो दूसरी मॉडल चलाने की कोशिश करेंगे जो L1 हो गए वहाँ पे, और इनको फोर्सिबली वो मॉडल चलाना पड़ जाए। तो क्या इन लोगों के पास अभी ऐसा कोई फैसिलिटी है या इनकी कॉम्पिटेंस बिल्डिंग के लिए कोई उन्होंने दूसरे मॉडल भी ट्राई कर लिया बिफोर एक्चुअली अप्लाइंग समवेयर? नहीं तो क्या होगा कि दे विल ऑलवेज ट्राई टू से कि माई मॉडल पॉसिबली इज बेटर एंड ऑल दोज थिंग्स। तो हमें उस चक्कर में क्या होगा, इन बिटवीन द सीजन पता चला कि MITR इज ट्राइंग टू फाइंड आउट नो दिस पर्सन इज नॉट एबल टू रन दैट पर्टिकुलर मॉडल। सो
probably it should be a test check that the TIP who is applying to implement a particular model is also comfortable with the model other than what he has run. Then only the things will be good. Similarly, for the MITR also, maybe NRSC has particular model, CHF model, which they are very comfortable, or semi-physical model, which they are very comfortable. For an insurance company, running model is not the thing that we are looking at. We are looking at the final solution. So if it is comfortably run, everything is transparent, then it is good. So only question is that from the discussion it happened, I mean the impression was that some of the TAPs might be thinking that they probably will run their own model only. So I think one can respond. इसको मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ थोड़ा सा. चीज़ें की बहुत क्लियर कट इनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाला हुआ है कि मॉडल्स जो एज पर जो SOP मॉडल हैं उनके अनुसार ही चेंज करना है. उसकी मॉनिटरिंग मित्र करेंगे कि कोई चेंजेस है या नहीं है. रेगुलर इंश्योरेंस कंपनी और इसमें रेगुलर इंटरेक्शन की इसमें बात किया हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी रेगुलरली इसको मॉनिटर करते रहेंगे क्या इनपुट्स रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ों को. तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि आपका कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई अपनी नॉलेज और अदर चीज़ों को इनबिल्ट नहीं कर सकते. जो अदर पार्ट है वो सेपरेटली जो भी इनको फीडबैक देना है, अदर चीज़ें देना है, फ्यूचर्स डेवलपमेंट और अदर चीज़ों का वो अलग एस्टेक कमेटी को देंगे, वो फ्यूचर एग्जामिन करके देंगे. सिमिलरली फॉर द मित्र को भी केवल जो मॉडल दिया हुआ है मॉडल को ही इम्प्लीमेंट करना है. अदर जो रिसर्च और अदर डेवलपमेंट और अदर इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्वालिटी में, अदर चीज़ों में कि हम कैसे टाइमलीनेस में, ये सारे चीज़ फ्लेक्सिबल है. लेकिन अदर चीज़ों की जो बीच बीच में रिव्यू होंगे यस टेक कमिटीज़ और रिव्यू करके ये इस तरह की गाइडलाइन वगैरह निकालेंगे. दूसरा क्वेश्चन आपका था मिस कर गया, दूसरा सेकेंड. सर क्वेश्चन ये था कि एक मॉडल ये चला रहे हैं. हाँ, अगर दूसरा चीज़ों में इसलिए हम लोग ने बात किया था पहले कि चूंकि हम लोग के पास समय कम था, जो पहले हम लोग बात कर रहे थे कीपिंग इन व्यू लार्ज स्केल जो इनके स्केल कर पाए थे, तो उसमें हम लोग ने जब लार्ज स्केल पायलट किया था तो इसमें मॉडल्स रन करने के लिए दिया गया था कि सिमिलर प्लेस पे और एजेंसीज को मिक्स करके थोड़ा सा मॉडल दिया गया था, तो इस आधार पर किए थे. लेकिन अभी भी ये चीज़ें इसलिए स्टेट्स गवर्नमेंट को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर वो मॉडल फाइनल कर देते हैं तो अकॉर्डिंगली इनको पेनाल्टी और अदर क्लाउज और सारे चीज़ों के SLA के साथ करना है. तो इनका रिक्वेस्ट ये हम लोग एडवाइस ऑलरेडी दे चुके हैं कि आप जो है जो रन कर पाएँ, कंफर्टेबल वे में कर पाएँ, किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसी जगह टेंडर करें. तो अभी इस प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व करते हैं. ओवर द पीरियड बहुत सारे चीज़ों सभी हमें इंडस्ट्री को देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, क्या चीज़ें हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर हम लोग फिर फर्दर जो इम्पैनलमेंट और अदर चीज़ों में प्लान करेंगे. सुनील सर मैं थोड़ा सा ऐड करूँ. There was a question. So all the models which has been proposed in the SOP manual by MNCFC are matured models. The TIPs who has worked on this pilot for last 3-4 years, who has been shortlisted by MNCFC, they have their own models and matured models and able to achieve the required accuracy level defined by MNCFC. Each TIP whosoever is participating in the RFP process will definitely go along with the model for which he has done the pilot in that in the MNCFC. MNCFC in the SOP also it is they have provisioned and mandated that the TIP who is participating in the RFP should have the prior experience of running that model in the same environment for a particular time period or for a particular geography. So that confusion is not there whether the TIP is capable enough to run the model which has been proposed, or there is any maturity or prematurity question about the model of the TIPs. मैं मूर्ति सर से रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चंस इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए कमेंट्स करें. मूर्ति सर. Just a little bit of understanding gap here. There are 5 models prescribed by STEC committee. These model performance is more or less same. There is not significant difference between the performance of these 5 models. The model selection is at the discretion of state. State may consult different agencies. They may come to an idea
I want this model to be implemented for this. Accordingly, they float RFP. The agencies, whatever it may be, the states will consult different agencies and it is their discretion to pick up a suitable model for their state. Once it is picked up, then they go for RFP kind of things. The empanelment agencies, what we have done based on their experience, by discussions with them based on their reports, these agencies are capable of implementing any one or two of these 5 models. So these agencies are nothing to do with model selection by the state. It is at the discretion of the state, that's all. Once the state is selected model, declared in the beginning of the season, and no other choice, they have to implement. Okay. Any other question? No question? Sir? Please last. सर पैडी और वीट के अलावा जो अदर क्रॉप्स हैं जिनके लिए प्रोसेस मतलब आएगा बाद में, उसके लिए कौन से मॉडल आइडेंटिफाइड हैं? बाद में आएगा, अभी हम लोग ने केवल पैडी एंड वीट के लिए डाले हैं, प्रोविजनिंग किया हुआ, उसके लिए स्पेस ऑलरेडी गाइडलाइन में डाला हुआ है, तो जैसे ही आएगा हम लोग गाइडलाइन में डालेंगे उसको। इंश्योरेंस जो है वो तो सारी क्रॉप्स के होंगे ना सर? इस क्लियर किया हुआ इसमें कि केवल हम पैडी वीट के लिए हम येस्टेक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बाकी रिमेनिंग क्रॉप्स के लिए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स ही केवल होंगे और उसके आधार पर ही हम लोग कर पाएंगे। उसमें एक्सेप्शन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को दिया हुआ है, जो उनमें जो मॉडल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क जो अदर चीज़ें, क्योंकि हम अभी टेस्टिंग स्टेज में हैं, लार्ज स्केल पायलट कर रहे हैं, उनके जो फीडबैक आएंगे, उनके साथ साथ जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जो फीडबैक आएगा उसको पूरी एग्जामिन होगी पूरे सारे इंडस्ट्री के साथ, एसटेक कमेटी और अदर सारे, उसके बाद जो मॉडल फाइनल होगा एसओपी, उसी एसओपी में मॉडल हम लोग ऐड करेंगे। अभी हमारे लिए केवल पैडी एंड वीट है। CMM1. Sunil ji, I asked this question yesterday also, I'm just repeating it. जो existing system है ना, before the new winds come in, उसका clarity हो जाएगा तो it'll be easier. There are about 6 states that are running on the existing system of weather. इसके लिए एक्चुअली जो हमारा फाइनेंशियल रूल्स जो हैं अकॉर्डिंगली उसके अनुसार हम लोग करेंगे। गवर्नमेंट एजेंसीज को हम लोग सिलेक्शन बेसिस पर कर सकते हैं, उनके लिए भी हम लोग नॉर्म्स एसटेक में डाले हैं। विंड्स में अभी हम लोग डिस्कशन में कर रहे हैं क्योंकि मोर एंड मोर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन उसमें इन्वॉल्व है, तो आप इंडस्ट्री और अदर सारे से डिस्कस कर रहे हैं। मेजर है कि हम लोग प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म हमारे टेंडर के थ्रू होता है। हो सकता है कि जिनके पास ऑलरेडी स्टेट्स में काम कर रहे हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सारे चीज़ें इस्टेब्लिश हैं, रीलोकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑलरेडी ये नेचर में इनबिल्ट है कि उन प्राइसिंग उसी तरह से करेंगे ताकि उनको L1 सेम कंपनी होगा। हम एज्यूम कर रहे हैं ऐसा कि चूँकि अदर लोग आएंगे वहाँ लोग फिर से रीस्टैब्लिश करेंगे, तो और सेकंड आपको डिस्काउंटिंग ये करना हो कि ऑलरेडी आप लोग की इस्टेब्लिश वहाँ चीज़ें हैं, तो ये सारे चीज़ें कंपटीशन बिडिंग और फाइनेंशियल जो हमारे डिस्कवरी है उसमें हो जाएंगे, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हो जाना चाहिए 4-7 स्टेट्स में। जो मीन वाइल जो एडहॉक अरेंजमेंट करना है जो हम लोग डेटा का है, जैसा सर ने बोले कल भी एश्योरेंस दिए कि इसको हम लोग डिपार्टमेंट में एग्जामिन करके हम लोग बताएंगे। इसलिए हम लोग ने मेन पूछे थे कि क्या मिनिमम टाइमलाइन होगा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इनबिल्ड कर पाएंगे। उस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग टाइमलाइन प्लस जो हमारी डाटा रिक्वायरमेंट अभी RWBCIS के लिए, उसके लिए एडहॉक अरेंजमेंट जो भी होगा हम कम्युनिकेट करेंगे स्टेट को इमीडिएटली, इंश्योरेंस कंपनी को। I have an observation to ask from QCI कि आप empanel करेंगे कुछ agencies को to do the work on your behalf or you have the workforce to do it throughout the country? How will you go about this work? You're muted. Can you unmute yourself, please? Yes, yes. Yes, sir. Sir, we are having a good mechanism that all over the country we are accrediting some of the agencies for the quality management systems. So we have the assessors all over the country.
So what we will do is that the monitoring and every part will be our own, core team will be our own, but on the ground, those who are working in the local language, local area, so we'll take the help from the accredited agencies only. This is the one extra precaution we are taking. We will not take any person from the market, but we will take from the agencies which are accredited by QCI only. They will be, I'll say, not word proper control, but they will be in our supervision only. Already they are in our supervision, and the next time also they will be in our supervision. Okay, my request to you then is that you should quickly sit with the WINS committee and develop formats for actual verification. कि क्या क्या citing की क्या क्या check करना है, actual checklist type formats in which the reports will come. So quickly, I think Mr. Murthy will have to sit with you and develop it. All right. Yes, sir. Already, sir, we had 2-3 meetings. We visited even Dr. Murthy. We requested Dr. Murthy to visit our office also, so that he can have a confidence that what type of the organizations we are. So we did that, and we'll do next meetings also. We are always ready for it, sir. And just I mentioned, we visited even the ground with some of the agencies. We have visited their offices also. All right, thank you. Okay, any other question? And okay, we'll require some more time from you also, sir. Okay, thank you. ये हम लोग इस नोट के साथ कि हम लोग इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार हैं. Sir, I would like to highlight my small suggestion on CC guidelines, sir. So there are one clause in the CC guideline. So ये सारी चीज़ें हम लोग जो भी चीज़ें बची हुई हम लोग टाइम के अनुसार जो चीज़ें आप लोग रिटर्न दे दीजिए, एक बार फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे. कोई क्लियरिफिकेशन है तो 1-to-1 भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में. थैंक यू पैनलिस्ट, थैंक यू. Thank you, Sunil ji, and thank you to all our panelists. अगले सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं. आज हम हमारे किसानों के साथ एक विशेष संवाद सत्र आयोजित कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आधारित है. मैं अब आपका रुख विशेष सत्र की ओर बढ़ाना चाहूँगी. भारत के किसान यानी हमारे अन्नदाता हैं जो भारत की समृद्धि के लिए रात दिन अपने खेतों में मेहनत करते हैं और देश को अनाज भंडारण के मामले में आत्मनिर्भर बनाते हैं. उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, लेडीज एंड जेंटलमैन. तो आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, रायपुर जिलों से किसान हमारे साथ उपस्थित है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रही है. तो आइए हमारे साथ किसान उपस्थित है, उनके साथ एक विशेष संवाद करें और उनसे हम जानें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ज़मीनी स्तर की गतिविधियां कैसे किसानों को प्रेरित करती हैं और कैसे हम इस योजना को किसानों के हित के लिए अधिक बेहतर बना सकते हैं. सबसे पहले मैं हमारे कुछ अतिथियों को निमंत्रित करना चाहूँगी इस मंच पर. रवि मित्तल, कलेक्टर जसपुर, दीपक सोनी, कलेक्टर कुंदागांव, प्रभात मलिक, कलेक्टर गरियाबंद. और इस किसान संवाद को संचालित करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक श्री B.K. मिश्रा. और उनके साथ उपस्थित है, उनके साथ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री आशीष अमित टप्पू, डेप्यूटी मैनेजर AIC, एंड श्री प्रशांत पांडे, नेशनल कोऑर्डिनेटर एग्री बिजनेस बजाज अलायंस, टू अकम्पनी श्री मिश्रा जी ऑन स्टेज. और अब मैं हमारे किसानों का नाम लेना चाहूँगी. उन सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मंच पर आएं. दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं गिरवर लाल शर्मा, बलराम सिंह पटेल, ललिता बाई पटेल, रोमा लाल साहू, द्रौपदी बाई साहू. और कबीरधाम से हमारे साथ है देवराज साहू, रायपुर से विषम लाल वर्मा और राजनांदगांव से है अनेश्वर वर्मा, तोमिन चंद्रवंशी एंड मालाबाई मरगाएं. जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारे अन्नदाता. आपका बहुत बहुत स्वागत है. तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. B.K. मिश्रा जी, विनम्रता से आपको मैं अनुरोध करती हूं कि आप इस सत्र का
शुरुआत करें। थैंक यू। हेलो। आज के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन में विशेष सत्र में उपस्थित छत्तीसगढ़ राज्य के कोंडागांव जिले से के डीएलएमसी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक सोनी साहब, मंजा सिंह, और जिनके लिए ये योजना संचालित की जा रही है सरकार द्वारा राज्य के अन्नदाताओं के लिए, और 2 दिन से उन्हीं के लिए किया जाए, तो उनमें से सभी प्रदेश के अन्नदाताओं के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित श्री देवराज साहू जी कबीरधाम जिले से, श्री भीष्मलाल वर्मा जी, श्री अनेश्वर वर्मा जी, श्री टोमेन चंद्रवंशी जी, माताबाई गिरबल लाल वर्मा जी, बलराम सिंह पटेल जी, ललिताबाई पटेल, रोमालाल साहू जी और श्रीमती द्रौपदी बाई को मैं राज्य सरकार, भारत सरकार और की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज इस विशेष सत्र के मैं श्री टोप्पो जी से ये अनुरोध करूंगा कि किसानों से उनका इस सभा से किसानों का परिचय करवाएं और योजना के बारे में जो उनके अनुभव रहे हैं उसकी जानकारी उनसे प्राप्त करके कि वो अपना साझा करें, जिससे और उनको कोई समस्या जारी है, कोई सुझाव है तो वो साझा करें, जिससे कि आगे इसमें और इस योजना को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। टोप्पो जी। धन्यवाद सर। मैं इस सम्मानीय मंच का पुनः नमन करता हूं और मैं यहाँ उपस्थित जितने भी कृषकगण हैं जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के अलग अलग जिलों से यहाँ पे आए हुए हैं, आज उन सभी को फिर से मैं जय जोहार करता हूँ। आप सब किसान भाई बहन ई मंच में सुस्वागत है और आप मन हमर पहुना हरब और आप मन के हार्दिक अभिनंदन है। अब मैं इस सेशन की सत्र की शुरुआत करते हुए मैं जो कृषकगण हैं उनसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछने की कोशिश करूंगा ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित जो भी इनका अनुभव रहा है और उससे क्या इन्होंने लाभ प्राप्त किया है, किस प्रकार की अगर कोई दिक्कत आती है और साथ ही साथ इनकी क्या अपेक्षाएं हैं, कुछ छोटे छोटे प्रश्न के द्वारा हम लोग कोशिश करेंगे कि इनके अनुभव को जान पाएं। तो सर्वप्रथम जैसे कि मिश्रा सर ने कृषकों का नाम लिया है, उसी प्रकार मैं दुर्ग के एक कृषक हैं जो हमारे बीच में हैं, श्री बलराम जी। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि बलराम जी आप ये अवगत कराएं, ये चीज़ अपनी बातें बताएं मंच को और यहाँ उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथि को कि आप अपने जो दुर्ग जिले में जहाँ आपका गांव है, जहाँ आप निवास करते हैं, वहाँ आप कितने समय से खेती कर रहे हैं और किस प्रकार की फसल लगाते हैं और मौसम को देखते हुए और खरीफ जो रबी मौसम हमारा होता है उसमें किस किस प्रकार की खेती करते हैं और कितनी ज़मीन आपके पास है। श्री बलराम जी। हेलो जी सर, मैं
दुर्ग जिले से धमधा ब्लॉक ग्राम दानी कोकड़ी निवासी। सर मैं 10 एकड़ में खेती करता हूँ और धान की फसल और खरीफ की सीज़न में और रबी की सीज़न में चने की खेती, चने गेहूं की खेती करता हूँ सर। और ठीक है, आप जो खरीफ और रबी का जो मौसम है उस हिसाब से और आपके पास जो ज़मीन उपलब्ध है उसकी जो उपजाऊ जो चीज़ है उसके आधार पे आप खेती करते हैं। ठीक है, अब मैं हमारे जो दूसरे कृषक है श्री गिरवर लाल वर्मा जी जो भी दुर्ग जिला से हैं, उनसे मैं ये छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अभी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस प्रकार से मानसून बारिश की स्थिति जिस पे हम लोग बहुत हद तक डिपेंड रहते हैं, उसमें हम उसी के अनुसार खेती का प्लानिंग हम लोग करते हैं, तो उस हिसाब से जो अभी जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार जो फसल जो हमारा कई बार कम बारिश या अत्यधिक बारिश के कारण फसल जो नुकसान होता है, तो उस तरीके से आपने क्या क्या उपाय करके रखे हैं और बीमा में उसका किस प्रकार आप उसको देख पाते हैं? नमस्कार, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार समस्त यहाँ अतिथिगण जो लोग आए हैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से एवं AIC से, धन्यवाद। इसके जिला दुर्ग तहसील धमधा गांव उड़पार से वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अभी जो है तरीका AIC जो है बीमा पॉलिसी, दूसरा जैसे है अपन खेती का जो चक्रण है, खेती चेंज करके अपन से परिवर्तन, जैसे धान है, धान बोने के बाद चना गेहूँ बोते हैं, उसमें फसल चक्रवर्तन जो है पहले दिसंबर महीने तक या जून जुलाई में बारिश होता था, अब बारिश का कोई टाइम नहीं है। तो अभी वर्तमान में जो है AIC है मेन है जो थोड़ा सा किसान लोगों को पॉलिसी की सहायता प्रदान कर रहे हैं। नहीं, मैं ये थोड़ा चाहता हूँ कि आप इस विषय को थोड़ा और खुल करके बताएं कि जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो फसल को अगर नुकसान होता है तो जो एहतियाती कदम जो आप जमीनी स्तर पर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जो बीमा जो आपका लेने का जो सोच आता है मन में, तो बीमा का सोच क्यों आता है, उस विषय पे आप थोड़ा बात बताइए। बीमा के लिए सोच आने का कारण और कुछ नहीं है, जैसे किसान का जो खेती में जो लागत मूल्य आता है तो उसका 50% 60% भरपाई हो जाता है पॉलिसी के माध्यम से। और जैसे पूर्ण रूप से अगर कहें तो अगर फसल को बचाना है बारिश से पहले, अगर फसल काटने के लायक अगर हो गया है तो बारिश से जैसे सूचना अगर आता है तो फसल काटेंगे, या फिर कट गया है तो जैसे माने काट के अपन ला लिए हैं तो उसको फसल को ढकने का या मिजाई करने की व्यवस्था करने की तैयारी करेंगे। ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी चीज़ें आप अपने से कंट्रोल कर सकते हैं उसको आप जमीनी स्तर पर करते हैं, लेकिन बीमा का कवर इसलिए आप रखते हैं कि जो आपके बस में नहीं है, ताकि अगर किसी प्रकार से फसल का नुकसान होता है तो आप उसकी भरपाई हो जाती है। आप इससे सहमत हैं? मैं अगला प्रश्न अपनी एक बहन कृषिका जो हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमती द्रौपदी बाई साहू जी से, उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जैसा इन्होंने बीमा के बारे में बताया, तो बीमा में कौन कौन से जोखिम जिससे हमें लगता है कि अगर ये चीज़ जोखिम है और जिससे हमारा फसल नष्ट होगा या उसको नुकसान होगा, तो जोखिम के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। नाम बोल के। मैं द्रौपदी साहू, ग्राम मुड़पार, ग्राम पंचायत भाटा कोकड़ी, धमधा, दुर्ग से। जोखिम में सर बाढ़ जैसा होता है और चक्रवात, सूखा, ओले पड़ना, ये सब जोखिम में आता है और उससे राहत। इसके अलावा जो और भी जो मौसमी कारक हैं उसके बारे में बताइए। हाँ, क्या और भी मौसमी जो कारण है जिसके कारण फसल नुकसान होता है? हाँ, बढ़ते जो परिवर्तन है मौसम का, उससे होता है फसल खराब। हाँ, उससे जो भी चक्रवात, बारिश या सूखा या बेमौसम बारिश होती है, ये सब है, तूफान। ठीक है। अच्छा, इसके आगे मैं एक दूसरा प्रश्न आपसे और भी पूछना चाहूँगा कि बीमा जब आप जान रहे हैं कि इस कारण से हमें बीमा करानी चाहिए, तो फिर आप इस बात पे जरूर प्रकाश डालें कि आप बीमा कराने के लिए कहाँ पे जाना
जाते हैं और कहाँ आपको सुविधा से बीमा हो जाता है? एक तो पहला तो अपना बैंक है, जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित, उसके बाद CSC सेंटर चले जाते हैं। एक ऐप है जिसको अभी यूज़ नहीं किए हैं, सीखना पड़ेगा। ऐप के द्वारा भी हम बीमा कर सकते हैं। और इसमें निवेदन है सर कि बीमा में ना आप जो आवारा या जंगली पशु होते हैं ना, वो भी हमारी फसल को ख़राब करते हैं, उसको भी ऐड करें बीमा, उससे भी हमें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो है हमारे अभी छत्तीसगढ़ राज्य में इस चीज़ को हम लोग अधिसूचित नहीं कर पाए हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं आप तीनों लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा और भी जो मौसम आधारित फसल बीमा योजना से जो आप लोग करीब करीब 7 साल से यहाँ सरकार में राज्य में चल रही है, तो आप लोगों को जब फसल का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई हुई कि नहीं? और दूसरा ये कि आपके राज्य सरकार और भारत सरकार से आप लोगों की क्या अपेक्षा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। पॉलिसी के बारे में सर बताएं। सरकार से हमारा यही अपेक्षा है कि जैसे जितने भी जैसे फसल है हमारे छत्तीसगढ़ में, मतलब बहुत सारे फसल लगाए जाते हैं, अलग अलग एरिया में अलग फसल है, तो हो सके सारे फसल में बीमा पॉलिसी का उसमें क्लेम लागू हो। और जैसे ओला वृष्टि और AIC जो बीमा कंपनी उसको आगे और बढ़ाया जाए। जैसे जिस तरीके से 3 साल लगातार चला है, उसका जो सेवा है बहुत अच्छे तरीक़े से किसानों का भरपाई किया है। और AIC में मतलब जैसे अगर बीमा पॉलिसी मिलने में, क्लेम मिलने में अभी तक कोई प्रकार कोई तकलीफ नहीं हुआ है किसानों को, डायरेक्ट खाता पर पैसा आ जाता है। और इस AIC प्रधानमंत्री फसल बीमा को आगे इसी प्रकार और चलाता रहना चाहिए। सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि अभी जितने इसमें हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं गई अभी तक? हाँ सर, इस क्लेम लेने में आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं गई? और समय से आपको क्लेम मिला कि नहीं मिला? अभी तक सर इस योजना से किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आया है और इस योजना से सर हम खुश हैं सर। किसान सब लाभान्वित हुए हैं? हाँ सर, लाभान्वित हुए सर। चलिए, थैंक यू। आगे तो एक और प्रश्न मैं आप कृषक गणों से पूछना चाहूँगा, जो कोई भी उत्तर दे सकते हैं, कि इस योजना से संबंधित कुछ भी सुझाव या कुछ अपेक्षाएं हैं तो पुनः एक बार उस पर प्रकाश डालें ताकि ये मंच को जानकारी जा सके। सर मैं बोलूँ सर? हाँ सर, इस योजना में जैसे सरकार जो है प्राकृतिक आपदा आते हैं उसको तो क्लेम करते हैं। प्राकृतिक आपदा के अलावा जैसे अभी से जंगल क्षेत्र में जंगली पशु है, आवारा पशु है, और बिजली विद्युत से शॉर्ट सर्किट से फसल पूरा समाप्त हो जाए सर, तो सरकार से अनुरोध है कि ये सारा क्लेम बीमा पॉलिसी के अंदर जोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा सर। और भी बहुत अहम बात है जो कि हम लोग देख पाते हैं कि कई एक बार रबी के मौसम में या खरीफ के भी मौसम में हम लोग देखते हैं कि असामयिक वर्षा होती है या अत्यधिक वर्षा हो जाती है, तो उस समय किसान के फसल जो खेत में रहते हैं उनको नुकसान होता है। उस समय आप लोग किस प्रकार से अपना जो अगर नुकसान हो रहा है उन कारणों से, तो आप कैसे अपना जो है इंटीमेशंस, अपनी जो फसल के नुकसान की जानकारी कैसे आप लोग भेजते हैं? हेलो, कोई भी एक जवाब दे। मौसम विभाग से जानकारी लेते हैं सर। बोलिए। और मोबाइल में जैसे मतलब आने वाले समय में या कल जो है कि मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि पहले से अलर्ट कर देते हैं कि आपका आने वाला मौसम पानी गिरेगा या फिर मौसम अच्छा रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग अपने फसल की तैयारी करते हैं। अगर हमको काटना है फसल और अगले दिन अगर वर्षा बता दिए हैं तो हम लोग रोक देते हैं, क्योंकि खड़ी फसल में अगर मौसम ख़राब हो गया, बारिश हो गया तो फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर फसल कट जाए तो उसमें हम लोग को नुकसान हो जाता है। तो उस स्थिति में आप फसल के नुकसान के विषय में किन किन स्रोतों से जो है वो शिकायत दर्ज करवाते हैं? किसके पास आप टोल जाके फ्री बताते नंबर हैं? है, भारत सरकार द्वारा भी है और AIC द्वारा भी टोल फ्री नंबर दिया जाता है जिसमें हम शिकायत दर्ज आप लोगों को ये तो मालूम है ना कि फसल यदि काट के बाद, जो आपने बोला काटने के बाद खराब होती है तो खेत में पड़ी रहती है,
तो ये इस योजना के अंतर्गत उसमें क्लेम मिलता है, वो कवर है, आपको आप लोग मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम। तो उसकी सूचना यही पूछ रहे हैं, उसकी सूचना आप कहाँ पर देते हैं? टोल फ्री नंबर पे देते हैं, टोल फ्री नंबर कंपनी के ऑफिस पे जाते हैं? हेलो, कि जो भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया था उसमें देते, ये बारे में बताइए। उसकी सूचना हम लोग कृषि विस्तार अधिकारी है या पटवारी है ना, या बीमा कंपनी है, अपने फ़ोन के माध्यम से जैसे भी है उसको सूचना देते हैं। फिर उन लोग आते हैं, फिर देखते हैं जगह, फसल को देखते हैं, जैसे भी बनता है उसके हिसाब से अपना नुकसानी जो बनता है समय के हिसाब से वो देते हैं। हाँ, बैंक से भी बता देते। टोल फ्री नंबर है सर, और फार्म मित्र जैसे उद्यान की फसल वाले हैं वो फार्म मित्र ऐप के द्वारा अपना पॉलिसी नंबर और फ़ोन नंबर और अकाउंट नंबर डाल के डायरेक्ट फ़ोटो खींच के उसमें भी अपलोड कर सकते हैं। फार्म मित्र ऐप बहुत ज़बरदस्त है, केवल उद्यान की फसलों के लिए बहुत अच्छा है। उसमें अच्छा रिजल्ट है। जैसे उद्यान के किसान हैं हम लोग, उसके लिए तो बहुत बेहतरीन है। टोल फ्री नंबर भी है उसका। टोल फ्री क्या है, कभी नहीं लगता, कभी लगा नहीं लगा। फार्म मित्र तो ऐप है, एक व्हाट्सएप की तरह का है, बस उसमें क्लिक करो, डालो अपना मेरे फॉरवर्ड आईडी नंबर और उससे हो जाता है। वो बहुत बेहतरीन है। अब मैं प्रशांत पांडे से अनुरोध करूंगा कि जो बाकी किसान भाई हैं उनका मंच में से परिचय कराएं और वो अपने अनुभव साझा करें और योजना के बारे में क्या अपेक्षाएं हैं उनकी जानकारी उनसे प्राप्त करें। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड सभी कृषक भाई बहनों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे इस सभा में आए अपने अनुभव को साझा करने के लिए। मेरा सबसे पहला प्रश्न श्री अनेश्वर वर्मा जी से होगा, बट पहले प्रश्न पूछने से पहले मैं अनेश्वर वर्मा जी के बारे में बता दूं कि अनेश्वर वर्मा जी एक काफ़ी प्रगतिशील किसान हैं और इनको कृषक रत्न अवार्ड, जो कि प्रदेश सरकार का एक सम्मानित अवार्ड है, उससे सम्मानित भी किया गया है। सो कैन आई हैव अ गुड थैंक यू। सो अनेश्वर वर्मा जी, आपसे मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप इस कृषक रत्न अवार्ड के बारे में भी अपने अनुभव साझा करें कि आपको जो अवार्ड मिला था, ताकि और लोग भी इससे प्रोत्साहित हों कि किन किन चीज़ों पे ये अवार्ड मिलता है। उसके साथ साथ आप हमें ये भी कुछ बताने का कष्ट करें कि आप कितने सालों से खेती कर रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप कब से ले रहे हैं, इसके क्या लाभ हैं, और आपको इसमें और कुछ सुझाव जो भारत सरकार को देना है जिससे आपके आने वाले समय में इस स्कीम को इस्तेमाल करने में आपको और सहूलियत हो। अनेश्वर वर्मा जी। सब जनला जय जोहार। आप तो नाम ही सुन चुके हो, अनेश्वर वर्मा नाम है मोर। मैं राजनांदगांव के डोंगरगढ़ ब्लॉक सबसे लास्ट छोर जैन हाँ महाराष्ट्र के नज़दीक है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। और खेती तो मैं सन 2005 से कर रहा था, जब मैं 12वीं पढ़ाते रहा तब से पिताजी के साथ साथ खेती करत का है, साथ में करो तो खेती के अनुभव मिलते हैं। दादाजी से सीखे, दादाजी के बाद पिताजी, फिर अपन खुद खेती कर रहा था आज के डेट में। और खेती में बहुत चीज़ देखे हैं। पानी पहले बहुत अच्छा गिरे, बारिश अच्छा है, अब तो धीरे धीरे पानी के दिन भी घटे थे और सामने जल्दी ना आके पानी अब पीछे साइड भी जाते हैं। बहुत ऐसे कीट व्याधि बहुत है, ओलावृष्टि, कुछ भी अचानक एकदम कुछ भी मौसम चेंज हो जाते, सुबह देखो कुछ और, दोपहर देखो कुछ और, शाम को देखो कुछ और है। और जैसे मोर बीमा में बहुत ये है, जैसे बीमा हर किसान को कराना चाहिए और हर फसल के जितना हो सके कराना चाहिए। आप जैसे बांध कुदारी खुरपी हाथ, लाठी हथुआ रखे साथ, बीज बोए बीमा कराए, सो पूरा किसान कहलाए। अब एकर में ओरिजिनल बता देता हूँ। बांध कुदारी खुरपी हाथ, लाठी हथुआ रखे साथ, काट घास खेत निरावे, सो पूरा किसान कहलाए। ये पुराना रीस है। अब का है बीज बो बीमा कराओ, तब ला कुछ बीमा जैसे करा था, बीमा के फायदा मिलते हैं, नहीं मिले वाले बात नहीं है। कुछ ना कुछ हद तक जैसे नुकसान हो ही तभी मिली, क्रॉप कटिंग के अनुसार या फिर GPS वो जो मशीन लगे हैं ना गांव में, वो कर अनुसार। अब मैं अपन अनुभव साझा कर देता हूँ। कृषि रत्न राज्य अलंकरण पुरस्कार होता है, जो राज्य सरकार 1 नवंबर स्थापना दिवस के दिन देते हैं। और मैं बहुत ऐसे टिकट है जेकर अनुसार से आप लोग पॉइंट मिला जाते, 100 पॉइंट करे थे मैं।
अलग 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 हर प्रकार के खेती आप ला दिखलाई लगी। और खेती में आप सब चीज़ नहीं कर हो तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। आप ला खाद चाहिए तो गौ पाले लगी, गौ पालू तो खाद मिली गौमूत्र से सब चीज़ से। और कुछ उद्यान की फसल ले लगी, आप उद्यान की में केवल सब्जी में मत जाओ, सब्जी के छोड़ आम अमरूद नींबू चीकू वो आपके एटीएम में साल भर में कुछ न कुछ फसल दे के जाइए। नींबू साल में 2 बार फलते, नींबू 2 बार फलते, आम 1 बार फलते, अमरूद 2 बार फलते। ऐसे चक्र बने हैं मोर यहाँ फार्म में पूरा। और बहुत चीज़ है जैसे खेती अलग अलग फसल चक्र चेंज करो और बहुत ऐसे है। आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपने पिछले 2-3-4 सालों में जब भी आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा लिया और कभी आपको नुकसान आई तो उसमें आपको कुछ नुकसान की अदायगी हुई, किस राशि में हुई, उससे आपको क्या सहूलियत मिली, अगर इसके कुछ आप साझा करना चाहें तो। सर मैं क्योंकि हार्टिकल्चर से ज़्यादा हूँ सब्जी से, तो पिछले साल टमाटर जो है बहुत नुकसान हुआ था। सब्जी खेती में टमाटर है और मिर्च जिसमें ब्लैक फंगस है, ब्लैक वायरस ऐसा कुछ करके आया था। इस बार भी बहुत आया है। पिछले साल टमाटर में जो नुकसान हुआ था उसका प्रधानमंत्री फसल बीमा में बजाज एलायंस द्वारा बहुत अच्छा क्लेम मिला था। बहुत यानी ठीक ठाक ही था, हेक्टेयर में समथिंग 43-42 हज़ार था, ठीक था। धन्यवाद अपने अनुभव साझा करने के लिए। और अब मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहूँगा जो इस मंच पे सबसे वरिष्ठतम कृषक हमारे बीच बैठे हैं, श्री भीष्म लाल वर्मा जी। और आपको देख के ये है कि आप शायद हमें वो अनुभव भी साझा कर पाएँ जो काफ़ी पुराने हो। सो आप अगर कुछ इस तरीके से हमें बता पाएँ कि आज से 10, 15, 20 साल पहले किस तरीके की कठिनाई होती थी जिसको आज धीरे धीरे भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से कुछ सहूलियत मिली, और क्या और सहूलियत आप आने वाले समय में चाहते हैं। ये फसल बीमा योजना लागू होने के बाद बहुत ज़्यादा राहत मिला हम लोगों को। पहले स्थिति बहुत खराब होती है। धन्यवाद। मैं भीष्म लाल वर्मा, रायपुर जिला विधानसभा से लगा हुआ मेरा गांव है। करीब मैं 27 एकड़ में खेती करता हूं। पहले खेती हम लोग को नुकसान का धंधा हुआ करता था, सिर्फ नहर के भरोसा और वर्षा के भरोसा खेती करते थे। और नुकसान के कारण धीरे धीरे हम लोगों ने ट्यूबवेल शुरू किया। ट्यूबवेल के होने के बाद में कुछ हद तक के नुकसान कम हुआ है, लेकिन फ़ायदा नहीं होता था। जब से प्रधानमंत्री फसल योजना लागू हुआ है उसके बाद से हम लोग फ़ायदा होना चालू हुआ है और उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। और पिछले साल फसल ब्यारा में आने के बाद में बारिश हुई थी 21 तारीख को। उस समय विकराल स्थिति पैदा हो गई थी, तो हमने लोकल आरईओ के माध्यम से शिकायत दर्ज कराया था। उसमें करीब करीब 10% धान हमारा गल गया था, नीचे में पानी निकाल नहीं पाए थे, नुकसान हुआ था। लेकिन बीमा के माध्यम से और फार्म 4 और 6 भरने से कुछ नुकसान राज्य सरकार की तरफ ने मिला था और कुछ बीमा कंपनी की तरफ से। अभी रबी के फसल में काफ़ी भरपाई हो रही है फसल बीमा के माध्यम से। और मेरा एक सुझाव है, समय ज़्यादा आपका नहीं लूँगा। रबी फसल बुवाई के लिए अंतिम तारीख जो 15 दिसंबर है, मेहरबानी करके उसको 31 दिसंबर किया जाना चाहिए, क्योंकि भूमि तब तक तैयार नहीं हो पाती और प्रॉपर ओल नहीं होने से नुकसान होता है, उपज नहीं हो पाता और तैयार करने में बहुत तकलीफ होती है। दूसरी बात, अभी तक जो फसल बीमा का राशि हम लोग को मिल रहा है उसमें पारदर्शिता नहीं हो पाया कि किस ढंग से राशि हमको मिलती तो है, लेकिन उसका अनुपात समझ में नहीं आया है अभी तक स्पष्ट। इसमें थोड़ा पारदर्शिता होना चाहिए कि किस अनुपात में मिलता है। मिला बहुत ज़्यादा। पिछले साल तो मुझे रबी में लगभग 1 लाख से ज़्यादा, मैं करीब 16 एकड़ में गेहूँ बोया था, तो गेहूँ नामित था उसमें बीमा में, तिउरा नहीं था, तो तिउरा का तो नुकसान कम हुआ, मगर गेहूँ पिछले साल लगातार बारिश होने से गेहूँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। औसतन हमारा तो 4 क्विंटल भी नहीं हो पाया था बजट, लेकिन लाभ मिला मेरे को करीब 1.5 लाख रुपए मिला होगा, बीमा से अनुमान है। लेकिन स्पष्ट गुणा भाग नहीं कर पाया मैं किस दर से मिला और कैसे मिला। तो मैं चाहूँगा कि इसमें किसानों के प्रति मन स्पष्ट होना चाहिए कि कौन दर से हम लोग मिलते। एक और निवेदन है, फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के कमी है। हम जे जागरूक किसान हैं
संपन्न किसान हम मतलब तो मालूम है, लेकिन जो छोटे स्तर के किसान हैं गांव में ओला मालूम नहीं है और बहुत कम आदमी का लाभ ले पाओ। जहाँ तक मोर जानकारी है बहुत आदमी शामिल नहीं हो पाए। जो जागरूक किसान हैं, पढ़े लिखे हैं, जो टीवी से जुड़े हुए, संचार माध्यम से प्रचार सिर्फ का पेपर में आते हैं सीजन में, और आयोग माध्यम से आयोग भी क्या होते हैं जो इंटरेस्टेड होकर पास जाते हैं। और जनरल का है ना गांव में जो समन्वय कमी है और स्टाफ है, जैसे पटवारी है, कोटवार है, मुनादी नहीं करे, ये मोर शिकायत है, गंभीर शिकायत है। तो एक राज्य सरकार लेकर संज्ञान में लेना चाहिए और व्यापक प्रसार होना चाहिए, ये मोर निवेदन है मंच के माध्यम से। आदरणीय मंत्री में आदर करते हुए मैं अपन बात विराम नहीं कर पहली मोर निवेदन 31 दिसंबर तक मान्य किया जाए, नहीं तो फर्जिफिकेशन होते इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम अभी तो ये हो गए है कि आप चॉइस सेंटर में जाके आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन क्या है 15 दिसंबर तक संभव नहीं हो पावते फसल बो पाना। काबर के वही समय में धान भी बेचना होते और उन्हारी बोना होते दोनों। हाँ, क्योंकि अब टोकन सिस्टम लागू हो गए तो एला पहली कारण बोला प्राथमिकता तय नहीं कर पाओ नंबर ओकर कारण हम पिछड़ जाता। तो ये मोर निवेदन कि ये मन लागू किए जाए और थोड़ा पारदर्शिता लागू किया जाए, कौन सा कत मैंने लागू पैसा मिलते हैं हमारे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद भीष्मलाल जी, और धन्यवाद अपने अनुभव साझा करने के लिए। और हमें पूरा विश्वास है कि राज्य सरकार और भारत सरकार जो है आपके सुझावों पे ज़रूर उस पर आपको कुछ न कुछ सॉल्यूशन देने की ज़रूर कोशिश करेगा। अब हमारे बीच में कुछ महिला किसान है, और जैसा सीईओ सर का एक हमेशा से मोटो रहा है कि भागीदारी आपकी बराबर की, तो सर वो चीज़ हमें मंच पे दिखना शुरू हो गया है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी शुरुआत है एंड हमें इनका तालियों से स्वागत करना चाहिए हमारी महिला किसानों का। हमारे बीच अभी राजनांदगांव से टोमिन चंद्रवंशी जी हैं। आप अपने हिसाब से जो भी अपने अनुभव साझा करना चाहती हैं कि आपने इस खेती में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शामिल किया, या कौन सी फसल आप उगाती हैं, या किस तरीके की दिक्कतें आती थी या अभी आती हैं, जिस तरीके के भी विचार आप हमसे साझा करना चाहते हैं, या आपके कोई सुझाव। मैं खेती के संबंध में बताना चाहूँगी कि जब हम ससुराल आए उस टाइम हमारे ससुर जी कोदो की खेती करते थे। कोदो जो होता था उसको चावल के साथ मिक्स करके पकाया जाता था और उसको खाने में उपयोग किया जाता था। उसके बाद उसके साथ साथ धान का भी खेती किया करते थे। तो हमारे ससुर जी कोदो और धान की खेती करते थे, कुटकी की भी खेती करते थे, लेकिन अब हम धान की खेती करते हैं और साथ में सब्जी भाजी, चने की फसल और गेहूँ, मसूर, इन सारे फसलों का हम अपने खेतों में उपज लेते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे हम लोग कृषक हैं तो उसमें हमारे पति जो हैं वो खेत में बहुत ही मेहनत करते हैं, तो उनके साथ हम भी भागीदारी अपना देते हैं। जैसे हम लोग अपना घर में समय देते हैं उतना ही समय हम लोग अपने खेती में भी देते हैं और अपने खेतों से हम लोग उपज लेते हैं, जिससे हम लोग अपने बच्चों का पालन पोषण और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो आज के आधुनिक युग में हम अगर खेती कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे ढंग से खेती भी कर रहे हैं, और जो पुराने समय में धान का उपज होता था वो बहुत कम होता था, लेकिन आज हम बहुत ही अच्छे ढंग से और उपज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं। साथ में आज हम सब्जी भाजी का भी खेती करते हैं, जिसको हम अपने खेतों में ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से उनकी उपज कर रहे हैं, जिससे हमको अच्छी आमदनी भी हो रही है। और मैं प्रधानमंत्री बीमा योजना के बारे में कहना चाहूँगी कि हम लोग किसान हैं। किसानों को शुरू से ही जब हम लोग अपने खेतों की जुताई करते हैं उस टाइम से ही हमको अपने खेतों में लागत लगाना, अपने खेतों में मेहनत करना, और साथ में जब हम अपने खेतों में लागत लगाते हैं उस पर हम लोग जब कड़ी मेहनत करते हैं तो हमें बहुत सारा उस पर बजट कहीं से उधार भी लेना पड़ता है, और कुछ तो हमें अपने घर से जो रहता है बजट उसके माध्यम से हम लोग खेती का काम करते हैं। तो इसके लिए हमें
सबसे पहले तो यही करना होता है कि जब हम अपने खेतों में बीज डालते हैं, उसके बाद हम अपने खेतों में जिस फसल को उगाते हैं, तो बीज के समय में ही हम अपने जो भी फसल है उसका बीमा करवा लेते हैं, ताकि अगर हमारे खेतों में अगर हमें उस फसल से अगर कहीं पे नुकसान हो जाए तो हमें प्रधानमंत्री बीमा योजना के माध्यम से हमें उसकी भरपाई हो पाए। इसके लिए हम लोग ज़्यादातर फसल बीमा का भी उपयोग करते हैं और हमारे अन्य किसान जो भी हैं, चाहे छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो, प्रधानमंत्री बीमा योजना का सभी लोग आज इस महत्व को समझते हैं और सभी लोग अपने फसल की बीमा भी करवाते हैं। बस इतना ही कह के मैं विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मेरा अगला प्रश्न श्रीमती मालाबाई जी से है। जी, अगर आप बता सके कि आप कौन सी फसल उगाती हैं और उन फसलों में किस तरीके की दिक्कत आती है जिसकी वजह से आप प्रधानमंत्री फसल बीमा का चुनाव करते हैं, और कहीं उन नुकसान आने में, दावों के निपटान में कभी आपको कोई दिक्कतें आई हैं या नहीं आई हैं, और अगर आपका कोई सुझाव हो हमारे लिए। मेरा नाम मालाबाई मारगाय, तहसील अंबागढ़ चौकी से हूँ। मैं 10-12 साल से खेती कर रही हूँ। हम तो पहले खेत में धान उगाते थे, अभी आधा खेती में जैसे सब्जी भाजी लगाते थे। पहले तो ऐसे भरासा ही लगाते थे, लेकिन अभी जो हमको स्कीम मिली है, जैसे मल्चिंग लगाए, ड्रिप लगाए, नेट की सिस्टम है, उसमें हम टमाटर, बैगन, मिर्च ये सब निकालते हैं। और हमें पहले तो बहुत नुकसान होती थी, जैसे ज़्यादा पानी गिर गया और कोई ओला गिर गया, इससे हमें बहुत नुकसान होती थी। अभी ये फसल बीमा कर रहे हैं और फसल बीमा से हमको बहुत कुछ लाभ मिलता है। तो फिर भी हमको किसानों को ये बीमा कम है, तो मैं सरकार से यही चाहूँगी कि फसल बीमा थोड़ा बढ़ा के करें। बस, धन्यवाद। सर, धन्यवाद सभी के अपने किसान भाइयों के अनुभव साझा करने के लिए। और जो अपने वर्मा जी ने जो धरसीवा के किसान हैं उन्होंने सुझाव दिया है, तो उसमें मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि जो कि क्लेम मिलता है, जिस अनुपात में आपका नुकसान होता है उसी अनुपात में क्लेम मिलता है। और अब तो भारत सरकार ने उसको पोर्टल में अभी इसी साल से शुरू किया कि वो क्लेम दावा के गणना करके और ऑनलाइन आपके सीधे बैंक खाते में जा रहा है। जहाँ रहा सवाल आपके प्रचार प्रसार का, आपने बोला, तो प्रचार प्रसार का भी काफ़ी वो होता है। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, आपके हाथ में पॉलिसी दी जाती है, जिससे कि आपको ये पता रहे कि आपका कौन सी पॉलिसी किस फसल की आप कराए हुए हैं। तो ये बाकी और जो आपके सुझाव हैं तो इसमें सुधार किया जाए, प्रचार प्रसार और इसको बढ़ाया जाएगा कि जिससे अधिक से अधिक किसान इसमें लाभान्वित हों। अब मैं हमारे बीच में ये 3 जिलों के जिला अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष भी उपस्थित हैं, तो मैं उनसे कलेक्टर कोंडागांव दीपक सोनी साहब से अनुरोध करूंगा कि इस योजना के बारे में अपने सुझाव और अनुभव साझा करें। Good afternoon all. I am Deepak Soni from 2011 batch, presently posted as Collector कोंडागांव। और सभी को नमस्कार, जय जोहार। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो फील्ड में हमारे भी ज़िले में किसान बंधुओं से बात करके, जो हमारे डिपार्टमेंट है, लाइन डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, अधिकारी, उनसे बात करके मैं सबके समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे पहला जो मुद्दा है वो है कि जो क्लेम सेटलमेंट होता है, जब क्लेम पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसकी जानकारी किसानों तक अगर पहुंचाने के लिए इफ़ SMS कैन बी अ मोड थ्रू विच इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट and every farmer should get to know whether their claim has been accepted or not. This SMS can be in vernacular language preferably. For example, for Chhattisgarh it can be in Hindi language so that किसानों को पता रहे SMS के माध्यम से कि हमारा claim हुआ कि नहीं हुआ settled. Second observation, that was the demand from the people in my district, that
there's a lot of delay in claim settlement. For example, till now the Kharif 2022 settlement has not happened in my district. So, and we don't have any dashboard at the district level to assess the information, to have an access to the information whether the claim has been settled or not, and how many farmers have claimed the payments. So, a dashboard can be developed and district team and block team can be given access to it, and also if delay in this claim payment can be minimized by insurance companies. Thirdly, insurance companies representative, if they can, it will be good if they can participate in the district level monitoring committee meetings, because normally what happens is whenever we keep the meeting, they are either not there in the district or somehow if that coordination can be increased further, it will help the district administration and the farmers. And moreover, at block level representatives can be made to sit in the block level agricultural office, ताकि किसानों को पता रहे कि कहाँ पे जाके अप्रोच करना है, कहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट बैठते हैं. If they can sit in the SADO office, that can be of great help. Also, जैसे कुछ किसानों ने यहाँ पे भी आग्रह किया कि IEC should increase, क्योंकि जो सक्षम किसान हैं, those who are well off and those who have big plots and those who are very much in touch with the district administration authorities, so they have all the information, so they can access the information. But कुछ किसान हैं जो बहुत ही गरीब किसान हैं और उनके लिए कंटिन्यूअस आईसी एक्टिविटी की बहुत आवश्यकता है. प्रचार प्रसार और अगर होगा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से तो दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प. एंड वन मोर इशू which I spoke to the state team and director ma'am ensured that will be resolved soon. So that was with respect to Bhuiyan, which is land record, and Aadhaar. So if there is any mismatch of information, then the application gets rejected. But the premium amount which was cut, which it doesn't get refunded on time. So that refund should be on time if the application is rejected. So that was the request. And last, for the Kharif season in my district, in Kondagaon district, the sowing starts very late. So the request from the farmers was if this cutoff date can be increased from 15th of July to 31st of July, so that by 31st of July all the farmers would have sown the crops. So that was the request from my farmer, from the district farmers. और जो आपने सबने साझा किए, आप तो फील्ड पे खुद कार्य करते हैं, तो ये भी हम अपने किसानों से बात करके आए, तो मतलब basically these are all the common points which are coming up from my district as well. Thank you so much. धन्यवाद सर. अब मैं गरियाबंद कलेक्टर श्री मलिक साहब से अनुरोध करूंगा कि अपने अनुभव साझा करें और जो अपेक्षाएं हैं वो. Good afternoon all. I am Prabhat Malik, District Collector गरियाबंद. जो यहाँ पे स्टेज पे किसानों ने जो सुझाव साझा किए, जो सर ने किए, मैं मतलब हमने भी अपने मीटिंग के हिसाब से जो डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज़ थे, मैं उसमें सिर्फ ऐड ऑन करूँगा. एक स्पेसिफिक ये रिवराइन डिस्ट्रिक्ट्स का ज़्यादा इशू है, मेरे जैसे डिस्ट्रिक्ट का गरियाबंद का, कि इनंडेशन लोकलाइज्ड इंसिडेंट्स में शामिल नहीं है. तो मेरे यहाँ कई सारे खेत हैं, मतलब फार्म्स हैं जहाँ पे फ्लडिंग के चक्कर में सिल्ट डिपोजिशन से क्रॉप ख़राब हो जाती है, बट लोकलाइज्ड इंसिडेंट में वो कवर नहीं होता है. तो बहुत ज़्यादा उसके चक्कर में क्लेम इशू रहता है. सेकेंड इशू जो है क्लेम ट्रैकिंग का, सर ने भी बताया था डिस्ट्रिक्ट लेवल वी आर नॉट एट ऑल एबल टू मॉनिटर कितने लोगों ने क्या क्लेम किया, मेरे पास फार्मर लेवल डेटा अवेलेबल नहीं है. द थर्ड इशू इज़ आई विल कम टू अ क्लेम वाला. उससे पहले एक चीज़ है कि जो इंटीमेशन का इशू है, 72 आवर्स वाला इंटीमेशन, हम लोगों ने कोविड के समय में भी ई पास सिस्टम वगैरह चलाया था. माई सजेशन इज़ जो एटलीस्ट मेरे डिस्ट्रिक्ट, आई हैव अ ब्लॉक कॉल्ड मैनपुर and a block called Devbhog. We have only one rural agricultural extension officer for the entire block. So और मेरा जो agricultural का जो पूरा setup है extension officers का, that is not equipped to handle कि फार्मर के यहाँ पे इंसिडेंट हो, वो पटवारी या आरईओ को बताए और वहाँ से इंटीमेशन होकर ऊपर पहुँच जाए. 72 आवर्स इज इनफिजिबल फॉर फार ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ लो पॉपुलेशन डेंसिटी और इंफ्रा अच्छा नहीं है. तो जब तक इंफ्रा नहीं बनता, हम जो कोविड में करते थे, एक रिक्वेस्ट होगी कि आज की तारीख में आप जब फार्मर रजिस्ट्रेशन करता है तो व्हाट्सएप चैटबॉट्स और सेंट्रलाइज कॉल सेंटर से हम एक्चुअली में हर नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं कि उस फार्मर का है या नहीं है, उससे कन्वर्जेशन इनिशिएट कर सकते हैं. सो दैट वे कैन बी यूज्ड फॉर फार्मर टू कम्युनिकेट बैक वाया सिंपली थ्रू अ चैटबॉट. एप्स इन जनरल हमारी डिस्ट्रिक्ट में वी हैव सीन आर नॉट फंक्शनिंग वेल बिकॉज
the local population in far out districts have a very good conversation with WhatsApp, neither with Instagram, neither with apps. तो अगर हम WhatsApp chatbot facility along with centralized call center जो receiving की जगह पहले call back करे, if that can be received at least, and जहाँ पे भी exception list generate हो सकते हैं जहाँ farmers contact नहीं हो पा रहे हैं, that list can be shared with us, हम district administration से उसको कर देंगे. तो अगर किसान सीधा ही अपना क्लेम थ्रू अ व्हाट्सएप चैटबॉट डाल सकता है तो ये पूरी प्रोसेस हमारे लिए बड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी. साथ ही में जो अकाउंट वेरिफिकेशन का PFMS से इंटीग्रेट हो रहा है ऑपरेशनल गाइडलाइंस में है, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल 1 रुपी ड्रॉप. प्राइवेट कंपनीज यूज करती हैं अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए कि जब आप अकाउंट रजिस्टर करते हो तो कंपनी उस अकाउंट में 1 रुपये ड्रॉप करती है और कंफर्मेशन मैसेज आता है. ये होता है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम चेक करने के लिए. तो PFMS में आगे चल के, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली जब हम क्लेम नहीं दे पाते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते हैं और वो ऑपरेशनल इश्यूज में अटकता है, हम उस पर इंटरेस्ट फार्मर को नहीं देते हैं. तो अगर वो 1 रुपी ड्रॉप सिस्टम इनिशियली ही इंप्लीमेंट हो जाए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्पेशली जो बैंक्स के थ्रू नहीं, जो अदर CSCs के थ्रू आ रहे हैं, क्योंकि जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस भी देखेंगे जहाँ पे भी CSC के द्वारा एंट्री में गड़बड़ या कुछ हुई, the operational guidelines do not impose any penalties on CSCs and neither are CSCs liable to pay any penalty. तो उसमें हम लिखते हैं कि लीगल एक्शन विल बी टेकन, बट फार्मर इज गेटिंग, देयर केसेज इन माय डिस्ट्रिक्ट जहाँ फार्मर्स हैव बीन को क्लेम नहीं मिल पाया है बिकॉज CSC के लेवल पे एंट्री में दिक्कत हुई. बैंक से जब एंट्री में दिक्कत होती है तो हम बैंक को प्रेशर करके क्लेम निकलवा सकते हैं, बट CSCs में फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उससे वो पैसा उसकी क्लेम की रिकवरी करा सकूँ. एक और था मेरी डिस्ट्रिक्ट में, बिफोर दिस मीटिंग आई हैव ट्रैक्ड, हम लास्ट 3 to 4 years से हम एवरेज 37 करोड़ प्रीमियम पे जा रहे हैं. ऑफ 80,000 farmers selling paddy to the on MSP, around 37,000 farmers are registered. 38,000 farmers are registered under claim insurance. The premium is something to the range of 38 CR, लेकिन जो claim payout हो रहा है वो around 14 to 15 CR है, which इन माई ओपिनियन देयर इज, क्योंकि हमारे यहाँ क्लेम करवाने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे एग्रीकल्चर स्टाफ पे आती है, वी आर नॉट एडिक्वेटली इक्विप्ड टू इंश्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम हो सके. सो सिंस द ऑपरेशनल गाइडलाइंस में गवर्नमेंट के अंदर प्रोविजनिंग है अप टू 4% वी पे टू बैंक्स जो उसका इंश्योरेंस कराते हैं. इफ़ वी आर रिक्वेस्टिंग इफ देयर कुड बी अ क्लेम कंपनीज जो आके क्लेम असेसमेंट में करें, उनको पर क्लेम पे कुछ परसेंटेज हम दे पाएँ. That will help me create an alternative infrastructure in district who has a incentive to reach out to every farmer, every जहाँ पे भी inundation हुई या जहाँ possible inundation है, उस claim को incentivize करने का है. My agricultural officer or my पटवारी does not have an incentive to go after this because उसकी परफॉर्मेंस असेसमेंट का ये मेजर क्राइटेरिया नहीं है. पटवारी के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड क्राइटेरिया है, मेरे एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए एग्रीकल्चर स्कीम्स क्राइटेरिया है. मैन पावर इज अ शॉर्टेज इशू. So if we could have, because it's a 22,000 crore approximately total premium जो PPT में, so if we could have say a 2 to 3%, हम 4% देते हैं, 2 to 3% reserve for this purposes whereby I can have a claim company at a district level, I would be able to have a district level person who can give me a weekly reporting. We are there to solve any issues, but issues raise नहीं हो रहे हैं. And one last thing, जो specifically I'll compare it to health insurance वाला part. Health insurance में specifically in metro cities when a private company gives insurance, तो अपने क्लेम को रिड्यूस करने के लिए दे आर यूजिंग ट्रैकिंग सिस्टम की आदमी हेल्दी रहे, दे विल इंश्योर कि आपको डिजीजेस ना हो. बट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में नरेगा लेवल स्कीम होते हुए भी जो मेरे एरियाज इनंडेशन फ्लड या इससे होते हैं, हमें आज तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है किसी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कि आपका ये एरिया बहुत ज़्यादा क्लेम प्रोन है, यहाँ पे ये मेजर्स लिए जा सकते हैं आपकी फसल लॉस को रोकने के लिए. कुछ नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, बट कुछ ऐसे डिजास्टर्स होते हैं जो नरेगा से स्टॉप डैम, चेक डैम और सिस्टम्स बना के हम एक्चुअली में प्रिवेंट कर सकते हैं. बट दैट प्रिवेंटिव रिपोर्टिंग इज नॉट कमिंग टू अस. वी हैव द फंड्स टू डू इट. सो दैट इज द होल पॉइंट कि एक अगर इफ यू गेट अ क्लेम कंपनी टू हेल्प इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लेम्स, एंड सेकेंडली इफ गाइडलाइंस में सम हाउ देयर हैज टू बी एन इंसेंटिव टू इंश्योरेंस कंपनीज या इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पे होंगी, तो वी वुड वांट टू नो कि हमारे कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आपने प्रीमियम ले दिया टू हेल्प रिड्यूस योर पे आउट, बट वहाँ इन जनरल स्टेबलाइज करने के लिए व्हाट आर द स्ट्रक्चरल एफिशिएंसीज नीडेड टू बी डन ताकि मेरे क्लेम पे आउट इसेंशियली कम है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्लेम करने पे फार्मर को नेट में लॉस ही है. अगर वो पूरी फसल उठा के बेच पाता वर्सेस क्लेम लेने में उसको नेट नुकसान आ रहा है.
So that were the major issues जो मेरे यहाँ पे हैं. There are some other issues. I will request वो other collectors करेंगे. But sorry, one last issue I forgot. जो localized में जो assessment के लिए जब district level एक team बनाती है जिसमें insurance वाला आता है, as per my district official there is still no clarified मतलब standardized SOP. जब इंश्योरेंस कंपनी और ब्लॉक लेवल ऑफिसर जाता है जो 72 जो मिड लेवल एडवर्सिटी असेसमेंट होता है उसका एक स्टैंडर्ड एसओपी आ जाए बिकॉज इट बिकम्स वेरी पर्सन स्पेसिफिक कि वो नजरिया आकलन कैसे कर रहा है. तो उसका एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं है कि अगर मैं गया तो यही सिस्टम अक्रॉस फॉलो होगा. एंड बिकॉज हम अपनी ट्रेनिंग में अदर स्टेट्स भी देखे हैं, क्लेम पे आउट में भी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान बहुत आगे जाते हैं बिकॉज देयर सिस्टम्स आर वेरी वेल एस्टैब्लिश, स्पेशली एसएचजी लेवल का. हमारे सिस्टम्स नहीं है तो वो गाइडलाइंस जो वहाँ बहुत अच्छी काम करती है हमारे यहाँ पे वो फेल होना शुरू हो जाती है. तो इसलिए अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, इस एरियाज में एटलीस्ट मेरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वी नीड अ थर्ड पार्टी इनहेरेंट इकोनॉमिक सिस्टम जो इंसेंटिवाइज करेगा अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल सिस्टम्स. थैंक यू. धन्यवाद सर. अब मैं कलेक्टर जसपुर रवि मित्तल साहब से अनुरोध करूँगा अपने अनुभव साझा करें. नमस्कार, मेरा नाम रवि मित्तल है. मैं वर्तमान में कलेक्टर जसपुर हूँ जो कि नॉर्थ में छत्तीसगढ़ में एक ज़िला है. मैं फार्मर से रिलेटेड इश्यूज़ और कुछ ऐसे इश्यूज़ जो फसल बीमा का ज़िले में इम्प्लीमेंटेशन को अफेक्ट करते हैं वो इश्यूज़ को उठाना चाहूँगा. तो फार्मर से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट इशू हमारे ज़िले में जो आता है वो वन पट्टे वाले फार्मर्स हैं. जो एफआरए वाले फार्मर्स होते हैं उनको हम एमएसपी पे पैडी प्रोक्योरमेंट कर पाते हैं क्योंकि उनका धान पंजीयन हम आराम से कर सकते हैं. लेकिन उनके इंश्योरेंस में हमें दिक्कत होती है क्योंकि पोर्टल के अंदर आरएफ और पीएफ नंबर या हम उनका रकबा एरिया को हम डालने की कोशिश करते हैं तो वो लेता नहीं है. जस्ट बिकॉज वी आर एबल टू परचेज पैडी फ्रॉम देम, आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि उनका इंश्योरेंस भी साथ में हो क्योंकि वो भी एक कृषक ही है. जस्ट वो मुझे लगता है एफआरए को भी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है. और जैसा कि सर ने भी कहा था अभी एक पॉइंट की समय वाली जो बात है, खरीफ में अगर 15 दिन आगे बढ़ा के 31 जुलाई तक कर दिया जाए या दिसंबर में उधर रबी में बढ़ा दिया जाए 15 दिन, तो वो बहुत ही एक बड़ी मांग रहती है किसानों की ज़मीनी स्तर पे कि सर और समय दे, तो काफ़ी ज़्यादा किसान और उस स्कीम का भाग होना चाहेंगे. और एक बहुत ही मेजर इशू जो यहाँ पे हमारे सीनियर कृषक थे उन्होंने उठाया वो पारदर्शिता को लेकर है. तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मैकेनिज्म बनाए गए हैं लेकिन ग्रास रूट्स पे कैसे किसान को पारदर्शी इस स्कीम को बनाया जा सके वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है. जैसे हम अमेज़ॉन में कोई भी ऑर्डर करते हैं तो पूरे ऑर्डर में दिखाता है कि आपका ऑर्डर हो गया, अभी आपके वेयर हाउस से निकल गया है, कहाँ पहुँच गया है. तो आई थिंक इसी तरह का अगर कोई सिस्टम बनाया जाए जहाँ किसान व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से या ऐप के माध्यम से या सिंपल SMS के प्रॉम्प्ट के माध्यम से ये पता लगा सके कि आज उसकी जो बीमा की स्कीम है, जो उसने बीमा कराया वो किस स्टेज पे है. जैसे कोविन के टाइम पे होता था, हम एक व्हाट्सएप SMS डालते थे और कोविन सर्टिफिकेट आता था. तो मे बी क्यों ना किसान एक मैसेज प्रॉम्प्ट डाले, उसके नंबर के आधार पे उसको पता चले कि उसका ऑर्डर स्टेटस इंश्योरेंस का किस स्तर पे है. तो बहुत ज़्यादा पारदर्शिता को मुझे लगता है इसमें हम बढ़ा सकते हैं. और जहाँ तक क्लेम की बात है, क्लेम में भी बहुत ज़्यादा इसमें डिस्क्रिशन रहता है. डिस्क्रिशन कभी रिजेक्शन का, उसको लेके जो एक ट्रस्ट होता है विद द इंश्योरेंस वो एक किसान का बहुत कम होता है. तो क्यों ना इसको हम कोई चेकलिस्ट या AI बेस्ड टूल बनाएं कि जैसे ही हम उसमें एंट्री करें, सो इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट ह्यूमन इंटरवेंशन इन डिसाइडिंग द सेटलमेंट्स, तो AI बेस्ड टूल कैन आइडेंटिफाई. जैसे कि हम देख रहे हैं काफ़ी केसेस में आजकल इनफैक्ट बच्चों की कॉपीज़ भी जो चेक हो रही हैं वो AI बेस्ड टूल से हो रही हैं. सो वाई कैन नॉट वी यूज़ द AI बेस्ड टूल्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स. तो उसमें जो ह्यूमन डिस्क्रिशन है मुझे लगता है काफ़ी कम होगा और जो फार्मर्स की ट्रस्ट है टुवर्ड्स द स्कीम उसमें काफ़ी ज़्यादा उनके बढ़ोतरी होगी. और दूसरा मैं कुछ इश्यूज़ जिला स्तर के यहाँ पे उठाना चाहूँगा. जिला स्तर में जैसा कि सर ने भी कहा कि हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेटा भी दिखता ही नहीं है. तो जो फार्मर्स का ब्लॉक वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा है उसमें क्या गैप्स हैं एंड कौन से ऐसे टास्क हैं जो जिला स्तर पे इमीडिएटली पिक करने चाहिए. आई थिंक इफ दैट आर मेड क्लियर इट विल बिकम वेरी इजी फॉर द डिस्ट्रिक्ट टीम टू डू वेरी फोकस्ड वर्क्स इंस्टेड ऑफ कि क्या करना है, किस पॉइंट पे कैसे करना है. तो वो फोकस काफ़ी अच्छा रहेगा. एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि जो जिला की टीम इंश्योरेंस में काम करती है वो हमारे जनरली DD एग्रीकल्चर्स होते हैं या फिर हमारे जो पटवारी होते हैं वही लोग काम कर रहे होते हैं.
तो जैसे बाकी स्कीम्स में होता है, हमारा नरेगा में तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एचआर का एनआरएलएम में होता है, तो क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पे हम एटलीस्ट एक एचआर दे सकें, क्योंकि स्कीम्स इतनी इवॉल्व हो रही है 2016 से, हर साल सर्कुलर में नए एडिशन सब्ट्रैक्शंस होते रहते हैं. एटलीस्ट सम टेक्निकल पर्सन शुड बी देयर हु कैन गाइड, हु कैन एटलीस्ट बी अ मास्टर ट्रेनर, हु कैन मॉनिटर, हु कैन प्रोवाइड अस विद डेटा, हु कैन डू प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय टॉकिंग टू स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डीडीए और बाकी लोगों के पास इतने ज़्यादा जॉब्स होते हैं कि हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो निटी ग्रिटीज़ में जाएं स्कीम की, दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल. एंड आई थिंक द कॉस्ट दैट विल बी इन्वॉल्व इन डिप्लॉइंग दोज पीपल एट द ब्लॉक और द डिस्ट्रिक्ट लेवल विल बी वेरी लेस कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ द स्कीम. And last point is related to the settlement of claims. So adding to what Prabhat said कि हम क्यों ना एक insurance settlement के लिए एक private company लाएं. So my proposition is कि आजकल हमारे जो SHG networks हैं बहुत strong हो गए हैं, तो जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर हमारी जो सुरक्षा बीमा योजना है, उसके अंदर एक बीमा सखी का कंसेप्ट है, जिसको पर सेटलमेंट ऑफ क्लेम हम 100 या 150 रुपये देते हैं. तो क्यों ना उन लोगों को हम फसल बीमा सेटलमेंट का भी काम दे सकें. सो एक्सटेंडिंग दिस कंसेप्ट टू दी SHGs, so it would help in a way कि those people are from within the community, everyone know them. तो उन लोगों को यदि कुछ इंसेंटिव पर सेटलमेंट यदि मिल जाएगा, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक वो बहुत ही अच्छे ग्रास रूट ऐसे लोग हो सकते हैं हमारे लिए, जिनको हम स्कीम में इन्वॉल्व करें. एंड सेकेंडली हमारे पास NRLM में कृषि सखी का भी कंसेप्ट होता है, तो उनको भी इस स्कीम में कहीं ना कहीं इन टर्म्स ऑफ द इंश्योरेंस, इन टर्म्स ऑफ क्लेम सेटलमेंट, जो डिफरेंट हमारे स्टेप्स हैं ऑफ द स्कीम, उनको भी अगर हम इस स्कीम के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, तो आई थिंक वी विल हैव अ वेरी गुड ग्रास रूट पीपल हु कैन रियली एबल टू हेल्प. क्योंकि हम पटवारी REO, सिंस वी ऑल नो द काइंड ऑफ जॉब्स दे आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन, तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा हैंड होगा. एंड लो कॉस्ट में हम स्कीम के हर स्टेप को बहुत ही इफेक्टिव हम लोग इसको बना सकेंगे. तो यही मेरे कुछ सुझाव थे जो फार्मर से रिलेटेड और स्कीम इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड थे. मैं मौका देने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा. थैंक यू. धन्यवाद सर, आप लोगों के आपके बहुमूल्य सुझाव के लिए. अब मैं मंच आगे कार्रवाई के लिए, हाँ, जो कलेक्टर्स का फीडबैक था उस पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो फसल बीमा का डैशबोर्ड है भारत सरकार का, उसमें विलेज लेवल तक का ग्रैनुलर डेटा आता है एनरोलमेंट का पूरा. उसमें आप क्लिक करते जाएंगे, नीचे तक पूरा डेटा अवेलेबल है. फिर जब क्लेम की बात पे हम आते हैं, अभी डिजी क्लेम मॉड्यूल लॉन्च हुआ है, उससे ट्रैकिंग आगे पूरी संभव हो सकेगी. तो वो और हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और उस पर आप ये कह सकते हैं अपग्रेडेशन होता जा रहा है. दूसरा, हाँ, और जो क्रॉप कटिंग फसल कटाई प्रयोग का डेटा है, ये राज्य सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो फसल कटाई ऐप से करें, क्योंकि ऐप से सीधे भारत सरकार के पोर्टल पे वो डेटा आता है. वो सबके लिए बहुत सुविधाजनक है, जिसके माध्यम से ही जो क्लेम है वो ऑटो कैलकुलेशन होता है और कनेक्टेड है वो डिजी क्लेम से. दूसरा, जो एक बात कही गई 1 रुपये ड्रॉप वाली, वो कर रहे हैं हम. जो बैंक से जितना डेटा आता है वो वेरीफाइड अकाउंट होता है, इसीलिए जितना भी अभी जब हमने डिजी क्लेम लॉन्च किया भारत सरकार ने, तो फेलियर 1% से भी कम था. जहाँ तक CSC की बात है, उसको भी हम रेगुलर CSC से टेकअप करते हैं. और CSC क्योंकि एक फैसिलिटेटर है, जो कि एक सोर्स, एक माध्यम है किसान को फसल बीमा कराने के लिए, लेकिन हाँ, उनका सेंसिटाइजेशन चलता है. तीसरी एक चीज़ और मैं ये कहूँगी, फसल बीमा का जो उद्देश्य है, वो बात ये नहीं है कि क्लेम कम या ज़्यादा हो, बात ये है क्लेम वाजिब हो, जो क्लेम मिलना चाहिए वो मिले. तो उसी के लिए हम प्रयासरत रहें, भारत सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार के सपोर्ट से भी. बस ये कहना चाहती हूँ. मैडम, आपने फसल कटाई प्रयोग के बारे में बोला मोबाइल ऐप से, तो छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम में कोशिश की जाती है कि यथासंभव जितने भी 100% मोबाइल ऐप्स के थ्रू ही किए जाए. मोबाइल ऐप के थ्रू वहाँ नहीं हो पाते जहाँ कोई समस्या आ जाती है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम जाती है, तो उसकी कोशिश की जा रही है, उसमें और आगे सुधार किया जाएगा. उस पर हम भी आपको हमेशा से सहायता करते आए हैं. ऑफलाइन भी चलता है ऐप, डेटा पुश होता है. राजस्थान बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 90% का, सो उसको हम फॉलो करें. छत्तीसगढ़ मैडम 60% से ऊपर है. जी बिल्कुल, बहुत अच्छा. चलिए एक बार फिर से तालियों से हम स्वागत करें और धन्यवाद करें कि वे आज
9वें राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन में आए और अपनी गरिमापूर्ण सहभागिता एवं विचारों से हमें अवलोकित किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हॉल में बैठे हुए हमारे सारे नहीं, आप प्लीज़ बैठे रहिए, बस शुक्रिया अदा कर रही थी। हॉल में बैठे हुए हमारे और भी किसान मित्र हैं जिनसे मैं निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप भी मंच पर आ जाए हमारे साथ। Can we have a huge round of applause for them, ladies and gentlemen? I would request Shri Ritesh Chauhan, CEO PMFBY, to hand over mementos to the farmers and our guests. Sir, आप बुलाना चाहेंगे और भी? संचालक कृषि महोदय को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि मंच में आए। Everybody in the audience, can we give a standing ovation to our farmers? बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। हेलो, भारत सरकार के जितने भी जनप्रतिनिधि अधिकारीगण यहाँ पधारे हुए, छत्तीसगढ़ सरकार के जितने भी अधिकारी यहाँ पधारे हुए हैं एवं एआईसी कंपनी के जितने भी अधिकारी पधारे हुए हैं, पूरा छत्तीसगढ़ किसान की तरफ से धन्यवाद एवं बधाई के सभी पात्र तहे दिल से। और थोड़ा से निवेदन है अधिकारी मन से कि बीमा के तारीख ला थोड़ा से बढ़ाए के प्रयास करूँ। जिन समय थे अचानक बारिश हो जाते वो समय गिरदावरी नहीं हो पाए, पटवारी मन के अधिकारी पहुँच नहीं पाए, तो जिन तारीख है और बढ़ाए के प्रयास करूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू। जहाँ जितने लोग भी यहाँ भी पधारे हुए हैं
पूरे छत्तीसगढ़ किसान की तरफ से धन्यवाद, आभार व्यक्त। थैंक यू। बोले छत्तीसगढ़ मातारी की जय। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। So ladies and gentlemen, as we come towards the end of day 2, I would like to invite and request our CEO, PMFBY, Shri Ritesh Chauhan ji, for the concluding remarks. Good afternoon, ladies and gentlemen. So, as we come to a close to this two-day event, I think I would take a few moments to reflect on the journey that we have had and on the journey which we are likely to go on, especially with the new initiatives that are being proposed. So I would like to first thank obviously for guidance and support the Honorable Secretary Mr. Manoj Ahuja, who took his time, came here, and as in his address he told very clearly that not all conferences in the ministry he attends, but this one he makes sure he comes. And at the time when I invited him, I told him, sir, that industry doyens and the technical partners and all the stakeholders will be present, so your guidance is required. I would like to thank all of you that after having attended those sessions, he has gone back recharged and energized and with a lot of feedback. He was telling while I went to see him off, he was saying कि रितेश बहुत अच्छा आपके यहाँ से feedback आ गया और अब जो changes हैं उसको हम एक ही बार में implement करें. At the same time, I would like to thank all the principal secretaries, additional chief secretaries and senior functionaries from the state who participated, gave their active inputs to improve the scheme. My special thanks go to Bhutani sir. He made time even on the second day of the conference. All I can say is that I am standing on the shoulder of this giant who has created the structure for the scheme. इनको अभी भी मैं तंग करता रहता हूँ एंड व्हाट्सएप पे जितने भी आप डॉक्यूमेंट देखते हैं वो सब इनके वेटेड आते हैं. सो इनको मैसेज डाल के कि सर आपने देखना है, आपने हमें गाइड करना है. आई लुक फॉरवर्ड टू हिज सपोर्ट. माय स्पेशल थैंक्स ऑल्सो गोज टू दिनेश सर. He is also somebody who's really driving the scheme in Rajasthan. It's a very, very important state for us. And mind you, इस बार दिनेश सर ने जिले स्तर तक जाके लोगों को इतना टाइट कर रखा है कि for the first time I am seeing a decline in problems arising from Rajasthan, and there are more solutions that are coming out. So at the same time, I would like to thank Dr. Murthy here, who has led from the front and has done amazing transformation since the time he has joined. I don't remember one day when he would have, slept without thinking or doing something about PMFBY. And this is to his credit, because he handles MNCFC, and MNCFC has a large footprint. As I said, मूर्ति साहब और मैं आजकल काफ़ी डिनर्स इकट्ठे कर रहे हैं ऑफिस में ही बैठ के. So we look forward to more dinners, Murthy ji, with your team. I would also thank Mr. Devasya, Thomas Devasya, although he left from IRDA. He has also given certain inputs which Devesh sir and ma'am are working on. I think if we could come up with some kind of a structure there, it can be a game changer for the country as a whole. So yesterday we saw inputs from Mr. Davale. He has been a
proponent who has led the scheme again from the front, made a lot of improvements in how it is run. Hari Kiran, who has just left, made a wonderful presentation on universal coverage. I think he gave a lot of perspective to states and the insurance companies and all stakeholders. Jharkhand and Punjab have participated, and I am looking forward that they sort of absorb all the knowledge which was on offer in this conference and take it back to their states. Special mention goes to participation from Jharkhand and Punjab. They have come a long way, and I am hopeful that they will be part of the family in this conference itself. It was really great to see the inputs from all the insurance companies, reinsurers, and active participation from the Mitra and TIPs. Today's session was very enlightening right from the morning itself. And I'm so glad that we had all these discussions, because this will be very helpful in formulating our policies. The farmers session, I thought, and the inputs by the DCs was really top notch. I would like to assure the House that from the next conference onwards, we shall institute a prize for the district collectors also. And ensure their active participation, and taking forward, I think they should be made an integral part of probably all the sessions. Maybe we can call specific district collectors for specific issues that we are taking forward. Because as they say in India, PM, CM और DM अगर ये किसी चीज़ को सोच लें तो वो हो जाता है. So, okay, so my request to all the stakeholders is that these are major initiatives that are being taken, especially YesTech, Winds and Cropic. And this is the time that we put in the midnight soil. So जितने आपको अभी हमने डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किए हैं, YesTech और Winds के हो गए हैं, Cropic और most probably operational guidelines will be circulating shortly. तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी आ रहे हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लें, वर्ड बाय वर्ड पढ़ लें, बिकॉज और इसीलिए आज की ये डिस्कशन भी हमने इसी उसमें स्ट्रक्चर करी थी, क्योंकि इसके बाद आई विल नॉट बी टेकिंग कि जी वो एक चीज़ छूट गई थी, अब इसको हम सीधा कर दें, उसको टेढ़ा कर दें. When the document is finalized, then I will not tinker with it. We will not really change it. So your suggestions are welcome. I will be doing the YesTech and the Winds manual within the next 7 to 10 days, as I said. जिसने जो सजेशन देनी है जी लिखित में अगले 3 दिन के अंदर मेरे पास पहुंच जाए, and we'll build that in with Mr. Murthy over dinner. And I would request the states like HP, Uttarakhand and northeastern states to look at universal coverage if possible, because there the participation is 90-10 now. So that is something which is doable. My request to insurance industry is please be cognizant of what all initiatives we are taking, and please be cognizant of the enthusiasm amongst the states in rolling out the technology initiatives, especially with regard to quoting the rates. Because let me tell you, we have to find, अभी भूटानी साहब से भी मेरी यही बात हो रही थी, that we have to find a solution to these problems. Otherwise, let's be very, very assured, as all stakeholders should be, that 5 साल बाद अगर इसी ट्रेंड से हम बढ़ते रहे, then the scheme is unviable. And the government will definitely have a relook and probably may even end up closing it, or going back to some other model which existed before, which does not then involve private sector participation. So let's be very, very mindful of this, and I would like all the insurance companies to take this message. Each and every one of us got us here, and it was really nice surroundings, and have curated all the experiences. I missed the experience in the morning, but I'm told it was energetic and was really well received. So on this note, now
अब गेंद आपके पाले में है with the states and the ICs for the tenders, and I wish each and every one of you the best of luck. We are there to help. Thank you so much.